be useful for diesel saving. And at the same time, around 3,000 rupees per hectare, there is a reduction in the cost of cultivation. So there are number of a good example of a mechanization. Crop yield can be enhanced, and mechanization to certain extent, if you are saving your diesel and other thing, then a greenhouse gas emission can be prevented. And there is a need for optimum use of different farm mechanization, so that you can reduce the cost of production. That is one of the things. Here I would like to mention that they are, as far as the mechanization in our country is concerned, overall mechanization level is around 40 to 45%. It is not 100%. Unfortunately, in spite of fact that our country is a agriculture based country, we are having a dependency on our agriculture. Our productivity is also moderate, and but our contribution in national GDP is around 20%. But overall level of mechanization is only 40 to 45%. In tillage, means a land preparation, and that is only 40% mechanization. In seeding and planting, around 35% is there. Harvesting around 60%, threshing in around 75%. Whereas in most of the other crop, rice and wheat, we can say to certain extent 60% is mechanization. And as far as the threshing of rice and wheat is concerned, up to 70% you can have a mechanization. Whereas in many crop, mechanization is only 15%. So that is a question that we are supposed to see how you can do. There are number of issues. It is not so easy to discuss the things in a 1 hour lecture, but I would like to mention to our all participants that there is a need to have a proper design criteria need to be developed, because somewhere it is a arid region, somewhere semi-arid, humid, sub-humid, irrigated, rain-fed. So according to the type of a agroclimatic region availability, we will have to design a different type of machinery or mechanization. There is a defect as far as the manufacturing technology is concerned. Make in India is one of the things which the government of India is propagated. But as far as the quality measurement is concerned, there is a big issue. I don't want to make some debate on this issue, but cost control, number of things are there, cost control, and even extension. Number of state still agriculture engineering separate division is not available. All agriculturists are taking the responsibility of your mechanization, which is not suitable in present context. Extension through industries people, and especially agriculture mechanized industries, and even custom hiring. As I said in a word, MECH gives a custom hiring. This is a solution. Nobody will be rich enough to purchase all type of equipment. So there is a need to have a custom hiring, and especially youngsters, they can do this exercise. Government should support them that they can start a custom hiring center at their rural area, and where they will give the machinery on rent, and they can earn the things. And there is also a very good scope is there, that use of ICT, automation and artificial intelligence. That is one of the major issues, and I'm sorry to say, not a single state government and even the central government is working here. Before we articulate the sense of ICT in mechanization, we will have to make a complete digitalization. If depending upon that, what is the use of machinery for a different agroclimatic region, then we will have to find out what are the appropriate solution for automation. And once the work of automation will cover, means your mechatronics will serve your purpose. Once mechatronics will give a design of a things, then you are supposed to make a right control with the help of artificial intelligence. This is also one of the things which is lagging. Most of the agri-business still it is not so refined one. So along with technical, industrial, social, economical, gender and policy issues, there are a number of other issues, that availability of power, availability of a easily access, physical accessibility of a number of machinery to the farmers level. So there are number of issues is there, and very pertinent issue is a small and marginal farmer.
But China is a good example where land holding is less, but even then they have a design a very small tools. Instead of a big tools and big machinery, they have designed a customized for a half hectare land, what type of a machinery can be used. Even financing of a farm equipment, because a poor level of a farmers, they will not be in position, and once they will procure the machinery, but after that, after sell is again dependency on an some intermediate person. So or dependency of a number of things. Even if you see tractor, we are not using tractor especially for agriculture purpose. We are using the tractor for a transportation purpose. That is also not required. So we will have to enhance the level of mechanization from 40 to 45% to at least of 55 to 60% by the end of this 2022. That is a basically expectation. If we compare with respect to BRIC country, in a BRICS country, BRIC, that is a Brazil, Russia, and India and China. Out of this, if we compare ourselves, Brazil is enhancing like anything. Russia has got a very established section. China, no doubt, it is a uncomparable. India is still lag in comparison to other BRICS country. So that's why we will have to see that what we can do. There is a good opportunity in mechanization. We will have to make a network of small fabricator, custom hiring we can introduce, even some entrepreneur which can supply the quality implements at the local level, and we will have to identify. Government of India has introduced number of a skilled job orientation for rural youth, especially Make in India, Skill India. So we will have to see that how we can take the advantage. So number of a good advantage is there. Even hand tools, we are not supposed to go through the engine power technology, but hand tools technology is sufficient, and we can have a drought, I mean animal technology. Of course, any engine power technology is available, we can go right way for getting it, but availability of right power, and this is also costly affair because we are dependent on the fossil fuel, which is itself is a very problematic. So now we will have to see that what type of implements we are supposed to use for land preparation, for sowing, interculture operation, irrigation, harvesting. And when we are talking about secondary agriculture, many people are thinking it is not only limited to processing and value addition. It is one component of secondary agriculture. The other components are there. What type of waste which we are getting out because of agriculture operation, you are supposed to recycling. Waste recycling and resources recovery system is also part of a secondary agriculture. So crop residues, animal hair, bones, and other things are there. How you can make use of this agriculture produce, and which are creating a nuisance in the environment. How we can enhance our main product, how we can enhance their shelf life, how we can enhance our productivity. So that's why if you see secondary agriculture, India after China is a second largest producer of a food product, and it has got a very good potential. Here I would like to say that quickly and very soon we will reach to the biggest level. Even we will leave China behind because we have got a very good potential. Only thing is that apart from a agriculture oriented subject, designing or deciding a seed and soil and water, we are supposed to tend towards a mechanization. And in case if we'll go towards a mechanization, I am sure that we will be in the form of a highest producer as far as the food and agriculture produce is concerned. So in presently, I can say there is a need. We will have to promote changes from processed food dependency to processed food autonomy. We are not supposed to depend on some external agencies may supply certain processed food, but we are supposed to produce the local product. That is a need in present context. Second need is that we will have to change the scope from food production to processing and value addition. Then we will have to shift from a supply of external agency to self-reliance. And then there is a need to preserve and enhance quality of food product. There is an estimate that even we are wasting the agriculture produced to the level of more than 1 lakh crore rupees, and that is equivalent to the budget of our
central agriculture ministry. So that's why there is a need. We are supposed to move from traditional technology to appropriate, simple and convenient and efficient value addition technology, because we stand first as far as the milk production is concerned. We are largest producer of oil seed, we are largest producer of cashew nut, we are first in mango, banana. Second, if you see in most of the fruits and vegetable, we are largest producer and consumer and spices. Rajasthan is a pioneer in this case, and more than 50 different type of spices we are producing. So they are a good scope, and around 23% of coconut world production is from our country. We are second in wheat, rice, jute, sugarcane. So there is a good scope. Even potato, if you see, it is a third across the world. Cotton again is a third. As far as the fishery is concerned, fourth. We reached to the level of a 20 million ton. As far as the egg production is concerned, we are standing fifth position. Meat is a seventh position. So we will have to see that how we can enhance the level of a processing, how we can enhance the level of our value addition. So that's why for that we will have to identify that which particular material will be sufficient, which particular type of machinery will be sufficient, because more than 75% of the total farm processing machinery, they are unorganized, small scale, and there is a shortage of a right type of implements or equipments or machine. So we will have to see that what type of a machine is required for ready to eat food, ready to cook food, beverages, and even processed frozen fruits, vegetable product is there, marine and heat meat product is there. And at present only, if you see value addition, it is only 2% by volume. So we will have to increase to the level of a 7%. And even if you see that by value, if you see value addition by value, it is 7%. We will have to enhance to 20%. If you compare ourselves in China, it is already 23%. Philips, a small country, 45% of value addition of product is there. UK, although in present condition, UK, the economy is going to reduce, and there is a very shortage of a fossil fuel, especially petrol, diesel are not available, and there may be chances of social war. But as far as the value addition in UK is concerned, in their agriculture produce, it is around more than that of 190%. So that's why there is a good scope in our country. We will have to see that how we can enhance the processing and value addition with the help of a right mechanization. And at the same time, if you see, all primary and secondary processing you can do, whether it is a fruits and vegetables, cereals, pulses, milk, meat, all primary and secondary processing, there is a need to identification of right machinery. Even byproduct utilization, need to identification of a right machinery. Supply and cold chain management, of course, again machinery is required. Custom hiring, I have already mentioned. Even product quality and safety, storage, marketing, and everywhere a machinery is required. So we will have to see that in a post harvest technology, how we can properly handle, how we can do a right type of packaging, how we will make our product to move from one place to second place, how we can store them. And it has been observed that for every 1% reduction in loss, we will save around 5 million tons of fruits and vegetable per year. Even many countries are not producing 5 million tons, because in our worldwide there are 204 countries, and out of this 204, around 32 countries are there where fruits and vegetables are being, of course they are very small size of a country, but their fruits and vegetable production is less than that of 5 million tons. Whereas if we can save 1% reduction in loss, we can save. This is a type of a potential available. So we will have to boost up mechanization in a processing and value addition, and that technology now it becomes a necessity. We will have to improve even safety, food safety, and food security. That is also one of the things. Mechanization is also playing an important role. And presently many cereals, pulses, fruits like mango, pineapple, citrus, all citrus fruit, grapes, tomato, peas, potato, cucumber, they are being processed on larger scale. That's why there is a need to reduce the cost of processing. And how we can reduce the cost of processing? Perhaps with the help of a identification of a efficient machinery, we can do this exercise. And in a processed product which is available in the market,
Each cost depends upon the how we can minimize and reduce the cost of processing, because you can have a certain control on cost of raw material, but cost of raw material coupled with the cost of a processing, then it will becomes with along with the profit, then it becomes a cost of a processed product in the market. So there is a good scope. I would like to conclude by saying that as far as secondary agriculture is concerned, in a fruits and vegetable processing, we can do even drying. Drying is a mechanical manipulation of your agriculture and horticulture produce, and thereby you can reduce the moisture to a safe level. Even cereals and pulses processing, milk processing, consumer product, whether it is a your mineral water, or whether it is a your even the chocolate, green grain processing is there. All processing, tea, coffee, and cashew processing, and meat, egg, meat, and meat processing, fishery processing. So there is a good scope as far as the agriculture mechanization is concerned. And definitely, if we will articulate right way of agriculture mechanization, then we will have a positive effect on socio-economical condition in the rural area. Even in the doubling the farmer income, 25% of income we can enhance. That is a number of case study has been is being cited by the document, and it is true. 25% of profit you can earn in case if you articulate the right sense of mechanization, and it is a powerful tool which can check even migration of rural labor in number of villages. What is happening? Most of the villagers, and especially rural youth, they are migrating towards the urban area for getting a right type of a job, and where they feel that a lot of employment opportunities available. But in case we can have a right mechanization set up at the rural area, it will also offer a number of employment opportunity. And mechanization, I can say, it could go a long way, not only in enhancing the productivity, but also improving the quality of work of rural labor forces. And it is good source. I can say it is a good source as far as the revenue generation from secondary agriculture is concerned. There are number of issues is there. I have not touched these issues, but to a certain extent, I have mentioned that what are the different advantages of mechanization in overall agriculture, and what are in even the post-harvest technology, and how we can apply. And I can conclude by saying that perhaps if you will remove mechanization word from agriculture, even the present agriculture will not take a right space, because whether it is a land preparation is there, farmer is not having a appropriate machinery, but even then he is hiring and doing this exercise. Now very few persons are doing a labor work. Otherwise most of the people now turning towards a mechanization. So that's why there is a need to identify and to articulate right type of machinery to the villagers. So with this word, thank you very much. Thanks a lot for giving me this opportunity. And I'm sure I have justified the things, but quickly I have covered. And although there is a need to have to discuss one by one, and in future, there is a good scope in a mechatronics. There is a good scope in energy efficient machinery, designing and development of energy efficiency, and there is a good scope of a mechanization. So this word MECH itself speaks the scope of a mechanization. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Dr. N.S. Rathore, sir. Thank you so much on behalf of Just Agriculture. This is a quite insightful talk for our all attendees. You have discussed many things, and you are just given in a nutshell regarding mechanization and also secondary agriculture, and the effect of urbanization on farm productivity, and mechanization, and restructuring the agriculture using mechanization. And sir, with your permission, we have a couple of questions. Shall we? Sure. Yeah. So, sir, you are discussing about mechanization, farm machinery. So, farm machineries are highly expensive. So, is there any? Do the government provide any subsidy on their purchase for the farmers? Yeah, most of the machinery which has got a value in agriculture production, they are being subsidized by the government of India. Even the state government is giving. It depends upon the every year. Say example in Rajasthan, every year based on the input which a ministry of which a different extension division, they are giving the information that there is a scope of this machinery. So government of Rajasthan used to give it. And same way is true at the national level as well. Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, they are giving a subsidies.
So that's why there is a need of custom hiring. I have insisted at a number of places. There is a need. A poor farmer is not in position to afford all machinery, because different type of machinery is required for land preparation, different type of machinery is for sowing purpose, for irrigation, harvesting. So that's why a farmer having a 1 hectare of land will not be in position to purchase all type of machinery. So he should, instead of purchasing, he should go for a custom hiring. And in a rural area wise, MP is a pioneer in this case. I would like to mention MP state government has done a good job, but still there is a need to set up a separate your agriculture engineering cadre in every state government as well, so that they will take care of the scope of a mechanization. And recently, I am really happy to see my friend DDG Agriculture Engineering. He has written a letter to all state government that this is a need of our, and we are supposed to establish a separate agriculture engineering cadre in existing agriculture ministry of a state government. So that's why it may be possible that there will be good chances in future. Okay, sir. And also you have specified in your speech that secondary agriculture is mainly of food processing and waste recycling. So our question is, are there any strategies to increase the shelf life of the products to reduce the waste, food waste? Is there any? Yeah, very first unit operation is a drying. Very first unit operation. If you see, if you go through with the basics fundamental of chemical engineering, even they used to teach this, and that is true for processing and food, for processing of fruits and vegetable as well. Because excess of moisture available in your food product, if it is not being controlled systematically, then it will spoil it. So basically, if we want to reduce our quality of a produce, and if you want to increase the shelf life of a product, very first unit operation is that how safely you can remove bring the moisture of within the product to a safe moisture level. And for that, a different type of drying technique is available. It is a systematic representation how you can enhance the temperature, how you can maintain a flow rate, how you can have a control on a relative humidity, and how safely you can remove excess of moisture. So in case if drying is to be attended by right way, I'm sure to certain extent we can stop the losses and we can also enhance our shelf life of a product. Okay, sir. Thank you. And one more question, sir. You have given a new abbreviation that for MECH. So M is for mechatronics. So our question is that how farm automation is different from mechatronics, and are there any courses that are available for the emerging science mechatronics? Yeah, see, farm mechanization means without control, without safety, security, surveillance, without simplicity, without efficiency, without, you can say, conveniently. So, in case if any machinery is available which has no control, it means it is a machinery, but it is not a control. If it is to be controlled by a certain mechanism, that's why I mentioned mechatronics means a mechanical plus electronic, and essentially electronic is meant for to control the system. How you can control the system? It should not excessively be being used. It should be it should use a optimally the type of fuel. It should not be dangerous while using it. So that's why mechatronics has got a number of good options, that how you can precisely ask your machinery to work as per of your desire. That is a basically mechatronics, coupling electronics tools along with your hardware, or along with your machinery and tools. Then it becomes a mechatronics, and with the help of mechatronics, there is a scope of safety of machinery and safety of, or even security of a farmers, those who are using it. And there is a continuous scope of surveillance of your machinery, that how it is working on your field, and whether it will enhance the quality of your produce which you are going to produce. That is basically is a mechatronic. It has got there are number of, we have also organized, when I was there in MPUT, we have organized number of courses, but still people are not interested in mechanization. This is my observation. What to talk about mechatronics when people are not interested in mechanization? Mechatronics is a dream for our country, but it has got a very good scope.
One should, especially engineers, agriculture engineers, they are supposed to divert their attention towards mechatronics. Okay, sir. Thank you. And also, you have specified about like digitization and also the ICT and artificial intelligence and the agriculture. So, what do you feel that how the scope of AI in the agriculture would Yeah. be? Actually, in our country, we used to say AI. This is very difficult to use the artificial intelligence. This is my observation. Basically, there are three things. Before jumping to AI, we are supposed to a digitalization. Very important thing is a digitalization. For digitalization, it is a collection of data. Data should be accurate, precise, and it should be in the form to how you can interpret that data. And based of digitalization, you will have to add the second step after digitalization, automation means mechanically by human beings you are controlling the efficiency and you are controlling the complete operation, repair and maintenance. After that, the third step is AI. So still we could not reach up to the level of this automation. So dreaming articulation of AI in a machinery, it is again a subject matter. And in a next 10 or 15 years, I don't think that AI based certain machinery will be available. Although experimentally people are saying that a driverless car they have designed. I don't want to quote very good one of the institute. They got a project of more than 1000 crore rupees in 2015 or 16. And at the end of the day, still no machinery is available in 2022. By after spending of 1000 crore rupees in, but basically what is happening, it is a mismatch. We can't give this mechatronics works and other work, energy efficiency work to general engineer. It is an agriculture engineer who is suitable for this job because he knows where this machinery will be used and they are aware that how to use this machinery. It is not only what to do but how to do, that is also important task. So in future, maybe possible, but sequentially it will reach to there. In USA, we reach to the level of AI. In China, still they are working on automation, and they believe because in China land holding is less. It is average land holding is a 0.5 hectare, other hectare. But whereas if you see in America, land holding is very big. So that's why they are going for a AI based machinery. In our country, where we are land holding is 0.8 and 0.9 average hectare. So we are supposed to see that how we can use step by step after digitalization, automation, and then in case if need arises, we can go. But this is a good scope. I tell you, not only for making operations simple and efficient and convenient, you can also increase the efficiency of use. You can even input use efficiency, you can increase, and process can be so much simple, and even repair and maintenance, because in every run, in every go, you need your machinery repair. When you are using if you are using a cultivator or any plow, after complete operation, you need a right type of a cleaning and other things. So that is a part of your repair and maintenance. So there are number of things are available. Thank you. Yes, sir. Sir, on a last question we have. So you have specified that agriculture contributes around 20% of GDP of India. So, but the thing is, on a counterpart, the farmers on a ground level, the farmers are not willing to be mechanized or implement mechanization in the agriculture. So how can we say that, like, how can we motivate the farmers to be mechanized or to implement mechanization techniques in the farmers in the ground level? Actually, as far as our extension portion in mechanization is concerned, it is very poor, or rather poorest. I would like to use the word. And all extension scientists, what they are doing, they are working towards identification and technology assessment, perfection, modification, capacity building, training, especially for the purpose of seed, fertilizers, and even climate change. And but very few scientists are working exactly for the cause of mechanization. So first of very important thing is that in case if you want to introduce, at least farmers should be fully convinced. They should aware that what are the advantages of using the machinery instead of a simple thing.
that a tractor is to be, every farmer has to purchase a tractor. But for what purpose? Tractor is a motive power. It is not a machinery, it is a power. And with the help of this one, you can meet out each and every requirement, starting from land preparation. Even you can have a right, if you match a right type of tractor with your seed drill, then you will be in position to place your seed and fertilizers at optimum depth. That is also need of our. So that's why extension has to strengthen. And similarly, we are supposed to have custom hiring center nearby every village, and especially youth, unemployed youth, they should be trained by government, and government should provide some loan facilities to them, and so that they can come in the field of custom hiring. Custom hiring means a set of a small setup which can be in position to give machinery on rent basis. So for that, a different type of mechanism is required. For that, government should initiate. And at the same time, this Make in India will be only successful if we will do right type of exercise as far as the mechanization used in farmers is concerned. In our country, this is the only subject. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you so much for your Thank you. great, insightful talk. Despite throat pain, you have graced the occasion with a thoughtful Thank you. address, and Thank with you. your high patience, you have addressed all the question and answers. On behalf of Just Agriculture and our society and the whole team of Agriculture 4.0, I would like to extend my cordial thanks to you, sir. Thank you so much. Now, I would like to conclude this session, and I would like to hand over the session to the next host, Dr. Himani Gautam, to handle the upcoming session. Dr. Himani Gautam. Thank you, Dr. Sandeep, and thank you, Dr. Radhor, sir. So, a very warm good evening to everyone present over here. Myself, Himani Gautam, Vice President of Just Agriculture, the magazine, and it is my indeed pleasure and foremost duty to welcome you all in this training program, which is embellished by the presence of dignitaries and respected personalities. So now taking the program to the next segment, I would like to invite our next speaker, Dr. Dayaram sir. He is Project Director of Advanced Center of Mushroom Research, Dr. Rajendra Prasad, Central Agriculture University, Pusa, Samastipur, Bihar. Sir has completed BSc Agriculture and MSc Mycology and Plant Pathology and PhD Mycology and Plant Pathology from Banaras Hindu University, Varanasi. And sir has served in different capacities as assistant professor, associate professor, then project director of Advanced Center of Mushroom Research, Dr. Rajendra Prasad, Central Agriculture University, Pusa, Samastipur, Bihar. And sir has also served as head of the Department of Microbiology Department of Rajendra Prasad, Central Agriculture University, Pusa. And sir has been awarded with various prestigious awards, which include Swami Sahajanand Saraswati Best Extension Scientist Award, ICR Award for Outstanding Extension, Distinguished Scientist of the Year Award, and many more. Dr. Dayaram sir is a fellow of Indian Phytopathological Society and Indian Society of Mycology and Plant Pathology. He is a life member of both of these scientific society, and his research area is fungal taxonomy with specialization in mushroom domestication, production, protection, and management of mushroom dissemination technology. Sir has published more than 75 research papers in high impact journals, 5 book chapters, 10 research based articles, 10 extension bulletins on mushrooms, 2 practical manuals, and 110 popular articles. He is credited with 4 patents, and Sir has developed 1 mushroom variety. So far, Sir has guided 5 MSc and 1 PhD student as a chairperson and 15 student as a co-chairperson and member of the advisory committee. Sir has run 6 externally funded projects of ICR, Macromade, AICRP on mushroom, and Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Sir has been instrumental in establishing the Advanced Center of Mushroom Research with 6 components, which are mushroom spawn production, mushroom compost production, mushroom processing and packaging, and mushroom products development. And Bihar ranked first during 2021 and 2022 for higher mushroom production. So, sir, with this note, I welcome you to grace the virtual podium and enlighten our participants with your knowledge. So, over to you, sir.
Sir, kindly unmute yourself. Thank you, madam. Welcome, sir. Good evening to all of you. I don't know why this. Yeah. Sir, kindly unmute. Yeah. Sir, kindly leave the meeting from the other device. So, thank सर जो दूसरा डिवाइस है आपका उससे मीटिंग को या तो आप लॉग आउट कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए सुनिए, उसको थोड़ा सा ना लॉग आउट कर दीजिए। उसको मतलब मोबाइल थोड़ा सा ना साउंड खत्म करिए थे। इको आ रहा है सर। ये हमारा वाला बंद कर दीजिए ना। सर जो दूसरा डिवाइस है उसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, दूसरे रूम में रख दीजिए कहीं, या उसका आप म्यूट कर दीजिए उसको या लॉग आउट कर दीजिए। स्लाइड में जाइए। सर आपने अगर मोबाइल से भी किया ना तो वहां से म्यूट कर दो। कुछ नहीं कर सर इस फोन से बंद ही कर दीजिए, आप मीटिंग लीव कर दीजिए। या या सर नाउ इट्स फाइन। स्लाइड में आप अपना वाला कहाँ गए? Participants, be patient, sir is working on the issue. Sir, kindly unmute. Just I want to show our activities first because this is I think 5:30. I don't know because my mobile is switch off. Then why it is coming from where? सर आपका पीसी पे भी चल रहा है जूम और मोबाइल पे भी चल रहा है। Now first of all I want to show the activities. I don't know why it is going on because my mobile is switched off. ओके सर किसी और ने भी साथ में ज्वाइन करके रखा है। क्या हुआ? दूसरी डिवाइस डिवाइस हमारा तो बंद है।
सर आप किसी और डिवाइस से या फिर ज्वाइन कर लीजिए। सर आपके पीसी के पास कोई स्पीकर तो नहीं पड़ा हुआ, उसकी वजह से भी कोई इशू हो सकता है? Participants, our team is in contact with Dr. Dayaram sir. He will be back after fixing the technical glitch in few moments. So kindly have patience and bear with us.
Dear participants, our team is contacting Dairam sir. So he is just joining in a short while. Have patience. So yeah, Dr. Jairam sir is joining in a while. So till then, I'm just briefing you about the program. So this is Agriculture 4.0, which is a 15 days international online training cum workshop program. And this is the future of farming technology and agripreneurship development. And this program is jointly organized by Sher Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology Kashmir, Just Agriculture with Agro Environmental Education and Farmers Welfare Society Punjab. And for this program, our co-partners are more than 20. And I must say that Team Just Agriculture is organizing such insightful training programs in a very regular interval and collaborating with such a big universities, which is really commendable. And our co-organizers, I would like to appreciate all of them, which are NAHEP, National Medicinal Plant Board, Government of India, MPUT Udaipur, Maharana Pratap Horticulture University, Karnal. And talking about Just Agriculture, so Just Agriculture is India's most credible platform, where with most of the agriculture professionals around the world are joined. So we have more than 5.5 readers across the world. And Just Agriculture offers a prodigious platform for all the researchers, students, scientists, and other agriculture professionals to share about the latest agri innovation. And our first issue of our magazine was launched on 5th September 2022. So it's been like less than 2.5 years, and till now 25 issues of our magazine are published, which is and our magazine and newsletter has published 2,500 plus articles from various academicians, researchers, students of ICR universities. And Just Agriculture, the magazine, is widely circulated among the farmers, professionals, and academicians among the 28 states of India Hello. and 63 countries globally. Yeah, yes, sir. Good afternoon to all of you. And Yes, I sir. thanks to organizer to giving the opportunity to me. And I think this is a third time you have face to face. We will discuss about the growth of the mushroom and technological development in across country. Just I would like to present few slides. स्लाइड दीजिए और आप वहां से दिखाइए 1 मिनट यही ना है is it visible? Yes, sir, Hello, visible. Yes, sir, visible. slide is visible. Yes, sir. Okay, we have taken the topic mushroom production and value addition for income and employment generation. Now you see, though it is old slide earlier, you may have seen that is our what are the challenges, that is unemployment, land division, climatic change, crop residue burning, migration, removal of rural poverty, malnutrition and water shortage. All these are the challenges not only in our mushroom, or you can say our Bihar. This is a general challenge to the scientists. What we have the opportunity across country, you see the temperature range, huge amount of crop residue and higher density of population. These are the our opportunities because sometimes we, as you see, huge amount of crop residue is available. That's why in Haryana, Punjab, or many states of India, they are burning, and which cause a serious problem regarding the pollution and other. Now, high density of population is also a problem
but we can use the, and you can say this is our opportunity. How challenge deliberation? You see, earlier speaker already discussed a long and for a long time many things that was on mechanization. Now we approaching खेती बिना खेत के means vertical farming, short duration of crops under different temperature regime. These are the few points which can deliberate the your challenges. Now, why mushroom? You see the all the challenges more or less are meet out by the mushroom. You see malnutrition, low raw material is agro waste, no need of technical expertise, short duration crop, everything is here. Now, cultivated mushroom variety. Here you can see in India, though many cultivated varieties are there, but commercial production you can popularize are available. Oyster mushroom you see in the first Hindi version that requires 20 to 30-degree temperature for their growth and development, and very much popular in plains, not only in Bihar but across country. Another one is button mushroom. It is also most popular. And in Haryana, Punjab, or you can say western region, these are the commercially grown. Next one is a milky mushroom. It is more popular in south. Another one is a, you say in the center, that is pedestra, that is also very much popular in south, because these required 30 to 38 degrees Celsius and high humidity. So the climatic condition of the south is very much congenial to both. But you can cultivate in other states also. Another two mushroom, that is hericium and shiitake. Though these are the edible mushroom, but it is considered as medicinal mushroom. So all these six mushrooms are have possibility to grow, or and the all the agro wastes which are the available in India. They are paddy straw, wheat straw, maize, sugar cane branches, lychee leaf. Many options are available. Now you see the production. This is NHV, but Bihar, Maharashtra, Odisha, Haryana. All these are the production. Now you see the contribution of different mushrooms. Here, 56% button mushroom. The share of button mushroom is 56%. Earlier, it was 73%. So, oyster mushroom and other mushrooms capture the space. This is the data you see. Now, Bihar, in the Bihar, what is the status? In fact, in Bihar, around the year mushroom production is very much popular. These are the certain examples. We have 65 span lab, minimum 50 kg and maximum 300 kg. Control unit 123. Total mushroom production you see oyster, button, milky, hericium. Now year-wise development, how we proceed, how we get the first position. If you see this slide, during 90
2000, we were very much confined to oyster mushroom. Later on, oyster and button we started. Further 12 to 13, only oyster and button were popular. Again, milky and paddy straw were introduced during 17 and 18. During 1920, it was the Corona period, and we succeeded. Shiitake, we introduced the shiitake, further hericium. Now, during this auricularia and king oyster, all these are the schizophyllum. All these are the here shiitake, hericium, schizophyllum, auricularia. All these are the medicinal mushroom. So, if Bihar can grow, so in all over country, all these mushrooms are cultivated, may be cultivated, and seasonal cultivation. We pro- don't promote or not plead control condition because the climatic condition is very much congenial. If you see the minimum temperature in the plains, 15 10 to 38 degrees. Sometimes it is more, but can be manageable. Now, you all are aware about this. What we have started or what we recommend, you see, entrepreneurship potentiality of mushroom. Now, earlier we considered the mushroom cultivation means only we grow the mushroom, any variety of mushroom are popular, we consume, we sell and get the income. But that is not like that. It is, it has the potentiality. What are the components from where we can lead spawn production? First components, another one is a compost production. You see, spawn is a major factor. That is a major component. You can say without spawn means seed. It has a broad, or you can say more challenge. And even then, Haryana, Punjab, and Delhi have more laboratories, and they produce button mushroom and other mushroom spawn. Directorate of Mushroom is situated in the Himachal Pradesh, that is Directorate of Mushroom. Dr. B.P. Sharma is a director, and he is also promoting the mushroom and keep center. Everything you can say support, culture, or you can say bank is in the Directorate of Mushroom. Now, another one is a compost production. You see, in the city, space is very low, so no more opportunity of mushroom production as commercial venture because there is space is low. If space is there, then you can set the control center. But in the rural area, you can grow seasonally. Uh, or you can set up the control condition as per your requirement because mechanization is compulsory but as per need. Now in Bihar, government of Bihar supporting the farmers with the subsidy, 50% subsidy. If you set up the spawn labs, then you can get 50% subsidy on, you can say 7.5 lakhs. If you set the button mushroom compost or a control unit, then you can get 10 lakhs. Similarly, many schemes are there. And every year they have target to distribute resources
poor person ready-made bag. Another one is around the ear mushroom cultivation. You see in the first slide where all mushrooms have been given according to. So 6 mushroom you can grow. Now processing and packaging, that is a more important factor, or you can say business, to enhance the shelf life and promote the marketing. Now, product development. You see, mushroom have a broader opportunity. You can use it as a vegetable, oyster, button, milky, shiitake, anyone. Only button mushroom you can't dry in proper way, but other mushrooms can be easily dried, or you can say dehydrated, and you can prepare the uh, products or enhance the shelf life. I think मुकेश जी, अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा प्रोडक्ट वहां से लोगों को दिखाएं। मुकेश जी, another component is spent management. You see, if you grow the mushroom in big way, so 50% दिखाइए अपने प्रोडक्ट सब दिखाइए हैं काहे वहां से तो फिर यहाँ कैसे दिखा। अच्छा चलिए, तो हम ये थोड़ा सा हम इसको सम अप करते हैं। नाउ स्पेंट मैनेजमेंट, बटन मशरूम spent can be used as a compost or fertilizer. You can say natural fertilizer in the crops. I have few examples, and you can say see on the our university website, and I can share the farmer who are using their content, their contact number. Another one is marketing, and everybody is marketing is simple. You can go for marketing as agriculture commodity. So these 6 component is there, and if you see the opportunity, income and employment generation, if you produce 1 kg of mushroom, so it requires 25 to 30 liters of water, as compare if you see the rice, it needs 3000 liter of water. So number 1, that is, but both are the different situation. Malnutrition, you see the malnutrition is itself. So marketing have the other system, you can say, which you people already apply in the any commodities. Now button mushroom, those who are seeing, that is this slide by how can we produce, things are very innovations. Now the mushroom, button mushroom, the control unit and round the year are seasonal. Many technologies are developed, or you can disseminate it among the farmer. Now what is the innovations, हम लोग innovation क्या कर सकते हैं? You see the small farmers earlier prepare their compost by long method. It take around the 1 month time, and in the Bihar as well as some other part of the country, during September or October, heavy rain disturb the compost production because resource poor
person have no such system where they can protect. Now, this was the pipe method of the pipe method means jet technology, and it was with collaborative with the DMR Solon. But pipe cost is too high. So we have done research on bamboo, and many places more than 4 inch the bamboo diameter is there. So we prepare and always given the substitute of the pipe, because one pipe cost 600 to 800, and due to heavy heat, high heat, it you see the destroy or some lost the money. So but in bamboo you can use it for 2 or 3 years. Another one is in the case of button mushroom, pedistra, wheatstra, sugarcane bagasse, mustard, many any substrate can be used. So we are working very excellent work, and sugarcane bagasse given 18 to 22% of the yield. Another one is I suggest now it should be in industry farm, means crop residue based mushroom nano industry. What is nano industry? In fact, earlier it was scattered employment. Some people in one place they employ 100, 200 person or man days per day. But what we propose, and we have done that, uh, it should be in a industrial farm. How industrial farm? In we have selected one village and poor person. Now all work are production, consumption, marketing, it means everything we should generate in the one village. Now we have 4, 5, the work is going on in 4 or 5 villages, and excellent result we have obtained. Now we are proposing such technology that in other part of the country this should be uh, adopted. Now different substates, these are the things. Uh, this is the pipe method you see. Now pasteurization tunnel method, this is very common, popular in around real mushroom cultivation under control condition. You see, this is the uh, button mushroom, oyster mushroom. These are the and medicinal mushroom. Uh, this slide I think is not in this medicinal mushroom, uh, because medicinal mushroom, shiitake and hericium, I have other slide in other presentation, but you see oyster mushroom, here button mushroom, you see what mushroom production around the year under controlled condition. You can con grow all these under control condition also as per requirements. We have the examples. Button mushroom is very much common because but there is certain things which increase the cost. But in oyster mushroom round the year, uh, many people or many growers in Bihar have adopted all the medicinal needs 20 to 25-degree temperature. So this should needs to popularize. Oyster mushroom, अब you can see cropping period round the year कभी भी कर सकते हैं. Temperature 20 to 23-degree temperature degree Celsius. Span run it needs 15 to 18 days. Time pinhead 18 to 25, and
Within 1 month, it can be harvested. The process, what are the process of substrate preparation, cropping, spawning, harvesting, packaging, and marketing. Substrate preparation, any crop residue, water soak for 4 to 6. I think this methodology every many growers are knowing. Pasteurized by hot water treatment for half hour and spawning 1 kg spawn for 10 kg straw. Bag prepare, incubate in hut at room temperature. मुकेश जी ये थैंक्स इसमें आ गया, ये थोड़ा स्लाइड कहाँ चल गया ये? हेलो सॉरी मुकेश जी, अरे यार ये स्लाइड गलत लगा दिए हो क्या? ये तो उसमें खत्म हो गया, ये कौन सा स्लाइड किए हो? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कहाँ स्लाइड उसको डाल दिए यार, इसको हिडन करिए। नहीं भाई, प्रोसेसिंग एंड हाँ वैल्यू एडिशन तो हो गया, तो नहीं ये नहीं है इसमें, वो सब वैल्यू एडिट वाला थोड़े हैं। यही तो है, दूसरा है। ओके, और बैक जाइए और बैक बैक और करिए और बैक, ये हम कर लेते हैं। एक मिनट, कहाँ से आ गए? एक मिनट, yes, is it visible? Hello. Yes, sir, this is visible. Yes, sir, visible. Yes, now production activity. I think the slide was changed somewhat. You see, is substrate preparation. Uh, now, in the case of oyster, milky, shiitake, you can say not shiitake, but paddy straw. All can the substrates are prepared by hot water treatment. This is very common. We never recommend the chemical treatment for the small farmers. But another one is you can see low cost machinery we have developed, and you can sometimes say that is organic production, but definition of organic is very different to what we say here. By this machinery 200 kg dry extra per day. So because we are working for the poor staff, poor. So this machinery cost is 18,000. So many people are interested to take it. Now see spawning, our women in the tribal area, they are working hard. You see the spawn run, how spawn is run. This is excellent. Sometimes our farmer claim that, sir, our bag is destroyed. No, you see, this is the clear cut growth and opening of the bag. Pinhead is a formation, small pinhead is there. You see small and big pinhead, and I think it is clear to all growers. These are excellent bags. Now crop management, this is our hut, and in the rural area, you can manage by this hut. What the size of hut is? 2,000 square feet. It yield is 50 to 70 quintal per annum. Oyster, button, milky, all three, they our small ladies are growing at this. In the winter season we have introduced the shiitake mushroom, and some of them have tried and they are growing. Now the harvesting, you see excellent crop of oyster.
we are focusing this crop in the plains because low cost and handling is very easy. Now, medicinal, I just give you a small brief introduction of the medicinal, which shiitake, that is Andarman hericium, Ganoderma, Cardiceps, Grifola, turkey tail. These are the many more mushroom or auricularia, but we are promoting only shiitake and hericium. These two, the cultivation technology of these two is very easy, very simple, and any can grow. Rishi mushroom, yes, exactly. But Ganoderma lucifer, exclusive medicinal mushroom, and Cardiceps is high caste. Cardiceps sinensis. Many persons are growing in the Uttarakhand, UP, but we are not taking in our priority Metake, turkey tail, Coriolus. All these are the only medicinal mushroom. The when we need the medicine or when need, but we are promoting only two. Plants man, how can we grow that medicinal importance? What is the control jaundice, Alzheimer, apoptosis, anti-cancer, anti-tumor, regulate cardiac problem, anti-aging, and increase immune system. You see, these diseases are very much common in our country, in mostly rural areas, sometimes in the. So we want to grow, and we are popularizing them. You see, small cost benefit ratio. Oyster button. If you grow in the plain 7 crops of the oyster mushroom, 1 crop button mushroom, and 4 crop you see the milky. So round the year, you if you calculate, so 30,000 per month income you can earn from the 2,000 uh, square area, because area of the land is decreasing. Now you see the lion's mane. Yeah, this is our hericium mushroom, about which you have already learned how it can be and grow. Now, one part. Now, the marketing, because mushroom is a new crop, but not new crop. You can say the cultivation is a first generation. So, after the marketing, people want its different value added product, because how you can increase the shelf life. The shelf life is important, because vegetables, it is under vegetable, they are perishable item, because 80 to 90% water constituents is there. In the case of button mushroom, it is difficult, but in other mushroom, any other mushroom which you have already seen, can be dry, can be dehydrated. So I will show you shiitake mushroom, hericium is there, uh, many mushrooms which dehydrated, and many products we have. So dehydration is one. Canning can done by only for button mushroom. Cold chain, value added products development and marketing. These are the certain things. Now, what are the value added products? Uh, Besides Vyanjan, vegetables, you can say sabji, are products which you get ready to eat. They
can be produced by the any mushroom. We have written one book. It will be read, uh, available in the market very soon because after cultivation or after production, what preparations are there? Because most of the family don't know their preparation or method of preparation. Now these are the some value added mushroom namkeen. It is most popular namkeen is if you go any hotel then they provide you and we take it. Sauce is very important and we got the success uh, for this production and we are working on them marketing strategy we have developed. Another one is a important is mushroom pakoda. It is old. We started first in 1994-95 with mushroom pakoda. But that is a improved version, mushroom cutlet. Now we are preparing or popularizing the mushroom cutlet because cutlet is already different types. Cutlet is a fascinating food, but we have already got success. Another one is mushroom litti. Mushroom litti is very important. Not only in Bihar, litti is very much famous in Bihar, Uttar Pradesh, sometimes Rajasthan, and in many parts of the India. So, to enhance the its nutritive value, we can use gujia. Gujia is very much common in many places. It is known as furukia. Sometimes it use the sira, sometimes dry. So very beautiful without hova, without milk. You say mushroom chop, mushroom halwa. This is very much gaining the popularity in Bihar. Two types of halwa we have prepared. Number one, general used by all. We supplement the flour, sometimes wheat, this ragi, madua, you can say fine millet, and maize. Maize is one of the most important crop in Bihar, so we apply them. But another version is falahar. That is falahar. In India, mostly many festivals are there when they our women go fasting. So it was a very challenge. Only few sometimes you get the food. Fruit is only common, but in rural area, singhara, panipal, flower, makhana, many other things. So we have prepare one recipe, mushroom halwa for falahar. Use the mushroom powder, mushroom rava, that is known as, and this one makhana. Use. So in a ratio and use. One time if you use, no need of any supplement till 12 hours. Now this is powder. Mushroom laddu. Mushroom laddu is very much famous in Bihar and all over Sir, sorry to interrupt you. country. Sir, few of Those our who come, participants, sorry to definitely interrupt you, they sir. Sir, few of test our it. participants has requested you to please elaborate in Hindi. So कुछ 10-15 मिनट आप हिंदी में समझा दीजिए इनको. Now mushroom bhujia, different names have been given. Bhujia, samosa. This is all product of oyster mushroom and shiitake
as well as schizophrenia. You see, biscuit. Biscuit is very common. Fortunately, we got the patent of this mushroom sweet biscuit, Rajan Pusa mushroom biscuit, and the one is a namkeen biscuit we have successfully developed. Now, mushroom paneer, we have already Sir, developed it, and it is also in process of patent, mushroom gulab jamun. excuse me, sir. The process is very simple Sir, for this production and very low cost. सर Hello? हाँ जी सर सर कुछ पार्टिसिपेंट्स बोल रहे हैं कि थोड़ा हिंदी में भी कहाँ समझा बोल दीजिए रहे हैं? उनको थोड़ा हिंदी में सुननी समझना है आप थोड़ा हिंदी में 10-15 मिनट उनको बता दीजिए तो आप सुने क्या बोल रहे हैं? हैं? ओके, तो ये कुछ पनीर है, सिंपल। और मैं अगर हमारी बात सुन रहे हो तो मैं इसे हिंदी में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। दो our farmers are connected. Mushroom gulab jamun, it is also a fascinating sweets. Mushroom peda, I think photograph is missing. Mushroom parwal sweet. Now another issue is packaging and branding. So different types of packaging and branding is available for this, because it should be in fascinating way. Everybody should convince from that. Now you see the packaging of our product, mushroom pickle, bhujia. These are the certain other products. Now, what other developments required? Academic activities. What academic activities should be? PG and PhD program, UG program. In UG program, this ELP, experiential learning program, is going on. Students are doing MSc, PhD thesis work on mushroom. Now certificate course in UG program. Now these, the future strategy, if we want to promote the mushroom, it should be included in our core curriculum course. For the, I always recommend, I plead that in the basic books, its education must be started from the basic, from the sixth class, so that everybody know the importance of the mushroom. Another one is government support to growers as well as entrepreneurship. But in case of Bihar, it is under agriculture. But in other state, it is not under agriculture system. So electricity will is higher rather than the agriculture. So this is the academic. Now, if you see the conclusion type activity, efficient use of agro waste. If you see what we want to communicate you, that agro waste can be efficiently how can use. Just you see agro waste produce the mushroom. Further, everything is applied in the soil. So this is the slide important. Now these are the things. We have just given the brief introduction or brief experience. Now I want to interact all of you and want to show the some
whatever we have communicated you, so we want to show the live material. अरे, बैटरी डाउन है. तेजू है कि गए? बैठाइए, लड्डू खा के तब चलते हैं. लड्डू निकालिए, उसको म्यूट कर दो तो क्या है? The recording has stopped. सर आपने इसी डिवाइस पे शो करना है या किसी दूसरी डिवाइस पे? मैम आप कॉल करके पूछ लीजिए, उन्होंने स्पीकर बंद कर रखा है अपना. ओके ओके. हेलो. हाँ जी सर. 728 को देते हैं, 730 कहाँ उनको दिखाइए. फोटो एक, चलिए छोड़िए. हेलो. Recording in progress. This meeting is being recorded. एक मिनट. हेलो. नहीं, हम ये कंप्यूटर है ना, हिमानी गौतम आ रहा है, तो आप यहाँ पर वो करो, हम यही शो करते हैं, क्योंकि अब मोबाइल से नहीं शो होगा. मुकेश जी आ जाइए. यस. आप मैडम कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे, हमने सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं पूछ रही थी कि आप मोबाइल से करेंगे अपने जो भी आपने शो करना है मटेरियल, या फिर पीसी से? आवाज का है कम आ रही है. आवाज पहले तो बहुत तेज आ रही थी. देखिए तो आवाज का कहे तो कम लो. ये विजुअल है? यस सर. दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी सर. हाँ, लेकिन उधर की आवाज नहीं आ रही है. तो ये सर थोड़ा हम वॉल्यूम हमारे बिस्किट्स हैं, सभी लोग देख रहे हैं. ये इसका बहुत बनाने का एक छोटा सा है. सर आपकी वीडियो जो है वो ऑफ हो गई है.
Mukesh sir, kindly unmute yourself and start the video. Sir, kindly unmute yourself. मुकेश सर अनम्यूट भी कर लीजिए. अभी जो है ये This meeting is being recorded. ये आपका जो है नमकीन है, पैकेजिंग जो है नमकीन का है, मशरूम का जो है ये आपका पिकिल है, देखिए ब्रांडेड पिकिल, पिकिल आपका है। इसे भी बनाने का जो जिन्हें जरूरी है वो बताएंगे, सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद में मशरूम भुजिया है और इसके माध्यम से आप ये मशरूम समोसा है। इसके बाद में आपका जो मेन है ये सभी जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये ऑल आर कॉमर्शियलाइज्ड, ये हम कॉमर्शियल। ये मशरूम लड्डू आपका है, काफी स्वादिष्ट है। और बिस्किट आपने देखा, काफी स्वादिष्ट ये भी है। अब ये देखें कि कुछ हम लोग जो प्रोसेसिंग जो करते हैं क्या है, ये ड्राई ओस्टर है। कहाँ है? यहाँ है कि निकालिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है.
आप ये फ्रेश सीजोफाइलियम है, काफी स्वादिष्ट मशरूम होता है और इसका बिस्किट भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये बटन तो सभी लोग कॉमन है, इसको आप देखे हैं सिताके, और ये देखिए सिताके हम लोग इसकी खेती कर रहे हैं। इसकी एक वैरायटी है जो कि थोड़ी सी सांवले रंग की है लेकिन काफी टेस्टी होती है। प्लांट तो थोड़ा सा अंधेरा है, नहीं तो वहां हम इसके क्रॉप भी दिखा सकते थे। अभी हार्वेस्ट करके हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मशरूम का बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे वर्क हैं और अपॉर्चुनिटी है। कोई भी हमारे युवा, महिला, पुरुष किसी भी एज के हो, वो इसको कर सकते हैं और अच्छा खासा आय का ये साधन बना सकते हैं। आप इसका ग्रो करके, टेक्नोलॉजी आसान है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने दिखाया। और अब आप लोग, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट अभी ऑन डिमांड हम लोग करते हैं। तो हमारे समझ से इट इज एनफ। अब आप थोड़ा हमारे श्रोतागण से अनुरोध इंटरेक्ट करें, सवाल पूछें और कोई चीज क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर करें। यस सर। वो थोड़ा हमें अनम्यूट करें। ठीक है सर, 2 मिनट रुकिए ना। करिए, हम सवाल फिर से उठा के रखिए, जैसे फ्रेश वाला रख दीजिए। हेलो। यस सर। हाँ, आप इंटरेक्ट करें, सवाल पूछें। सर आप अपना माइक जो है वो, हाँ जी हाँ जी, हो गया। जी यस सर। सर एक तो जैसे आपने बताया कि आपने हेरिसियम और जो दूसरी मशरूम्स जो हैं कॉर्डिसेप्स वगैरह या शिटाके पे आप लोग काम कर रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। Yes, you are audible. सर आई एम ऑडिबल टू यू? मैम आप ऑडिबल हैं, उनकी तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच है। ओके ओके ओके। शुड आई आस्क द क्वेश्चन? सर इज नॉट ऑडिबल। सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी की कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग द मशरूम्स, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चैट बॉक्स इज एनेबल्ड। सर सर आपके साइड से ना वॉल्यूम कम है, अपना वॉल्यूम अप कर लीजिए।
जी बोलिए सर, हो गया। हेलो। यस सर। हाँ बताए सवाल। सर पार्टिसिपेंट्स के सवाल है कि जैसे आपके जो आपका मशरूम सेंटर है वो बिहार के ही स्टूडेंट्स और फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या आउटसाइड बिहार के लोग भी आके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते नहीं, हैं? क्रॉस कंट्री यहाँ पर कैंडिडेट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए। एक क्रॉस कंट्री यहाँ लोग आते हैं, सबके लिए अलाउड है ओके यहाँ सर। पर। जी हाँ जी सर। और सर एक क्वेश्चन है कि फार्मर्स जो है या कोई पर्सन अगर अपने घर में मशरूम्स ग्रो करना शुरू करना चाहता हो तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है? और आप क्या सजेस्ट करते हो कि उसको कितने बैग्स से शुरू करना चाहिए, मतलब मिनिमम कितने बैग्स स्टार्टिंग में लगाने चाहिए और कहाँ से वो हेल्प ले सकता है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या किसी यूनिवर्सिटी से, कहाँ पे उसको हेल्प लेनी चाहिए? देखें कि हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ मशरूम का एक डिपार्टमेंट है। हर यूनिवर्सिटी में, हर स्टेट में, बिहार में है, ये हमारी दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटियां हैं, सब में है, कहीं भी। तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट से टेक्निकल चीजों को आप ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है वो डिफरेंट, उसके जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार 50% सब्सिडी देती है ईच एक्टिविटी पे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मार्केटिंग, प्रोडक्ट हर पे देती है। लेकिन और यहाँ बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम इसलिए है कि यहाँ बिजली की जो रेट है ना वो एग्रीकल्चर रेट है। क्यों? क्योंकि हमने इसे एग्रीकल्चर में ही रखा और जगह पे इसे इंडस्ट्री में ले गए। हरियाणा पंजाब ने इसे इंडस्ट्री में लिया तो नतीजा है उसका कास्ट जो है वो बढ़ जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट हर स्टेट में है, RKY है, बहुत तरह की योजनाएं। वो अपने कृषि विभाग में जाकर के किसान भाई संपर्क करें, किसी भी स्टेट के हों, वो जाके कृषि विभाग होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चर बैठते हैं, वो हेडक्वार्टर में बैठते हैं। जैसे अगर यूपी के हैं तो लखनऊ बैठते हैं, पंजाब के हैं तो लुधियाना में बैठते हैं, इस तरह से उनके सब हैं। तो आप वहां संपर्क करें और गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री के माध्यम से और बहुत सारे हैं, वो दे कैन गेट दी हेल्प। यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बहुत सारा बताया प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, कि आप नमकीन बना सकते हो, अचार बना सकते हो, बहुत जी प्रोडक्ट्स बना सकते हो मशरूम के। तो सर जी कोई सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है, जैसे FSSAI से कोई जी जी सर्टिफिकेशन कुछ वो, वगैरह कराना पड़ता हाँ है? सर्टिफिकेशन। देखिए ये फूड आइटम है तो इसके लिए दो तीन चीजें आपको जरूरी होती है कि जो भी प्रोडक्ट बनाए, हम लोग जैसे अपने यहाँ बनाते हैं तो ट्रेनिंग देते हैं जैसे लोगों को कि आप ये चीज बनाओ, उसके एग्जैक्ट फार्मूला देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर हम लोग उसको टेस्ट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे। इसके बाद में उसका FSSAI, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो उस पे लैब से टेस्ट हो करके उस पे लगाना है और FSSAI आप ले लीजिए। इसके बाद आप उसे मार्केटिंग करेंगे और बहुत इजी सिंपल प्रोसेस है। अभी गवर्नमेंट का फोकस इस पे बहुत ज्यादा है। जी ओके सर। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स का, वो बोल रहे हैं कि बेसिक स्किल क्या चाहिए अगर आपने मशरूम प्रोडक्शन का शुरू करना है और वैल्यू एडिशन का करना है, लाइक इन्वेस्टमेंट देखिए भी कितना चाहिए और कितना? हाँ जी सर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे यहाँ, लेआउट के बारे में भी पूछ रहे हैं सर। जी देखिए जो छोटे किसान हैं, जैसे छोटी महिला है, रिसोर्स पुअर महिला है, तो अब उनके लिए तो बिस्किट बनाना और ये सब तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बिस्किट अगर बनाएंगे तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन पिकिल
पिकिल एक ऐसा आयाम है, अचार जो ऐसा आयाम है, इसका पाउडर एक ऐसा आयाम है जो कि आसानी से आप उसको पैदा कर सकते हैं। 1,00,000-2,00,000 में इस सब काम शुरू हो सकता है मिनिमम। आप इसके स्वीट से, अब जैसे लड्डू है तो लड्डू में बहुत ज्यादा तो झंझट नहीं है, 1,00,000-2,00,000 में एक अच्छा खासा सेटअप हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आते हैं तो बोलते हैं सर हम बिस्किट ही बनाएंगे। हम लोग उन्हें डिस्करेज तो नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा उनको प्रमोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो बिस्किट है वो दैट मस्ट बी अक्रॉस कंट्री उसका होना चाहिए, लोकल बना के आप नहीं कर सकोगे। दूसरा है इसे समूह में बनाएं। अगर आप करते हैं समूह में तो बहुत ज्यादा कास्ट इसका नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट में मशरूम उपलब्ध है। हमारे कुछ भाई लोग लिख रहे हैं कि मार्केटिंग नहीं है, तो मार्केटिंग कैसे होगी? सिर्फ खाने के लिए मशरूम अगर आप लीजिएगा तो दैट इज नीड बेस्ड, वो हमें जरूरत है। आज हमारा मन है पनीर खाने का तो पनीर लूंगा, लेकिन जब वैल्यू एडिशन में हम जाएंगे तो वो खपत बहुत बढ़ जाएगी। जैसे सास, आप बताओ अचार प्लेन से लेके ट्रेन तक, पैदल तक, सत्तू की दुकान तक, एवरीवेयर पिकल्स है। आप देखो तो पिकल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अंडर वन इसके जो सॉस है घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आप देखें टोमेटो है, बहुत सारी सॉस उसमें आती है, स्वीट्स हैं। आज थोड़ा सा ये अनऑफिशियल बात मैं कर रहा हूं, अगर आप कोई भी मिठाई खाना चाहें तो हमें पक्का पता है कि शायद शुद्ध मिठाई कोई मिल पाए, हो सकता है मिलता हो देहात वहात में, अदरवाइज एवरी सभी में मिलावट आपको जरूर मिल जाएगा। 2 नंबर का दूध मिल जाएगा। तो ये सब चीजें। दूसरा पनीर, एनिमल प्रोडक्ट के अलावा पनीर इसका बहुत अच्छा है, घरेलू उद्योग है, उसको लोग घर में बना सकते हैं। तो मिला करके ये कंक्लूजन है कि इसका प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है जो कॉस्टली पड़ेगा, अदरवाइज जो कॉमन प्रोडक्ट है आप उसे अपने घर में, और इवन 20,000 से 25,000 में भी आप अपना मशरूम का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। समूह में करिए। महिलाओं को हम लोग, जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जो 100 महिलाओं को एक गांव में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो जब 100 महिला को ट्रेनिंग देते हैं, सारा इनपुट देते हैं, उनको हमारे यहाँ बिहार सरकार जो एक झोपड़ी दे देता है 1500 स्क्वायर फीट की, हम लोग टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। इसके बाद में फिर उनका जो है लाइफ चल पड़ती है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। अब चूंकि थोड़ा अभी समय है, नहीं तो मैं अपने किसान को इससे जोड़ देता और उनकी आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते, आप उनको देखते तो आपको लगता कि डेफिनेटली, चूंकि ये समय थोड़ा सा है। अब जैसे हमारे शाही जी हैं, अभी नए नए, अभी निक्की जी हैं, अभी उनका सक्सेस स्टोरी आएगा। तो चूंकि अभी जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो मैं सीधे आपको उनसे बात कराता और कैसे वो अपने लाइफ को, एक गरीब परिवार से कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ा रही है। जी यस सर। बताएं। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी सर। सर एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, कि मशरूम्स जो है वो फंजाई है, जैसे सबको पता है, तो उसमें बहुत सारी डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक होता है, तो उसको कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस पे हम केमिकल्स भी नहीं ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखें, ये मशरूम में इसका प्रिकॉशन ही है। इसमें जैसे फंजाई है तो डिजीज इसके अंतर्गत एज सच बहुत नॉमिनल हैं, और जो डिजीज उसमें आती है, अगर गलती से मशरूम डिजीज आदमी खा लिया गलती से, तो वो डिजीज आदमी में नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो है इन्वायरमेंट के कंट्रोल, देखें ये बहुत सिंपल चीज आप जाने कि एनीवे हाँ ये जी बहुत सर। सिंपल सी बातें हैं ना। इसमें वीड से आते हैं बस, इसमें वीड से क्या है, और कोई ऐसी घातक बीमारी नहीं आती है। और जो बीमारी आती भी है तो वो उसको आप हटा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, उसको बैग को हटा दीजिए। लेकिन कोई बीमारी इसमें एज सच ना ऐसे नहीं है, वो केवल इन्वायरमेंट मेड है।
जैसे नमी बहुत ज्यादा हो गया तो गल गया, हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर हुआ तो उसमें ब्लाच लग गया। तो ये सब बहुत सिंपल बीमारी है और ये कंट्रोल यूनिट में ज्यादा आती है। सीजनल ग्रोवर्स को में बहुत ही कम चांस है। बाकी हमसे किसान हैं, संपर्क में रहते हैं, हम लोग बताते देखें इसमें कुछ ये ऐसी घातक बीमारी का अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला कि ये जो है ना सीजनल क्रॉप है, जब तक वो लगेगा फल आएगा तब तक तो खत्म हो जाता है। दूसरा जो सीजनल करते हैं, हाँ जो कंट्रोल यूनिट है उसमें कुछ बीमारी आती है, लेकिन अगर प्रिकॉशन करें तो कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। ओके सर, थैंक सर। जैसे हमारे पास टाइम कम है तो हमें यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा। बाकी अगर पार्टिसिपेंट्स के कोई और क्वेश्चंस होते हैं तो हम वो आपको पर्सनली आपको मेल या व्हाट्सएप के थ्रू पूछेंगे सर। और पार्टिसिपेंट्स सर अब बोल रहे हैं कि पीपीटी आप जरूर शेयर कर देना हमारे साथ। नहीं, ऐसा है ना कि हम ये आपको बताएं कि मैं प्रत्येक दिन 7 बजे से 9 बजे किसानों की समस्या सुनता हूँ। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहीं मैं बैठा मिलता हूँ 9 बजे तक। तो जो भी किसान हैं आप नंबर शेयर कर दीजिए और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ जी व्हाट्सएप सर, के द्वारा आप हम नंबर जो बता है दीजिए सर। वीडियो भी देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी समय दिया और हमें लगता है हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी संतुष्ट हुए होंगे। कुछ लोग हाँ जी ट्रेनिंग के लिए सर। जानना चाहते हैं तो हम लोग सभी मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, वैल्यू एडिशन की भी देते हैं। अब अगला ट्रेनिंग हम लोगों का दिसंबर में होने की गुंजाइश है। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट आप लोग देखें, हमेशा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसका शॉर्ट फॉर्म है rpcu.ac.in। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें मौका दिया और हमें लगता है 600-700 लोगों से हम लोग इंटरेक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी सर। सर अब थैंक यू सर। और सर पीपीटी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारी टीम के साथ, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को आपकी पीपीटी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक This was indeed a very insightful session. Thanks a lot, sir. And now moving for the next session, I would like to hand over the virtual stage to Dr. Preeti. So, Dr. Preeti, are you there? Yes, ma'am. Yes, Himani ma'am. I'm here only. Am I audible? क्या कहीं शेयर कर सकते? Am I audible, ma'am? Hello. Yes, Preeti, you are audible. Okay, okay. Thank you, sir. Slightly tilt your camera downwards. Okay, okay. I think it's नहीं fine थोड़ा now. थोड़ा ऊपर 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 करो. Okay, okay. I think it's थोड़ा fine और now. ऊपर. Yeah. Okay. Perfect. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hope I'm audible to everybody. A very good evening, everyone. On the behalf of Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Sciences and Technology, Team Just Agriculture and Agro-Environmental Education and Farmers Welfare Society, Punjab, I Preeti cordially welcome to all of you to the first day of Agriculture 4.0, the future of farming technology and agri-entrepreneurship development, which is a 15 days international online training cum workshop program. I wholeheartedly welcome to all of you. As all of you know, this program is jointly organized by Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Kashmir, Just Agriculture with Agro-Environmental Education and Farmers Welfare Society, Punjab. I must congratulate Team Just Agriculture for organizing such insightful training programs at regular intervals and for collaborating with such big firms and organizations within such a short span of time. I must congratulate and I must say thank you. Without wasting much time, I warmly welcome our chief guest of this session, Mr. Amar Singh N. Patel, founder and CEO of Green Revolution, Connecting Agri to Build India. Before inviting Sir to deliver his lecture, let me briefly introduce Sir to inspire our participants. After completing degree, Sir started working as field assistant. In Mangalore Fertilizers, Sir has worked for 3 years as sales executive. Sir has worked as area manager for 1 year at Vijayawada, Gulbarga, and Solapur with Kan Biosis Private Limited company based in Pune, Maharashtra. Again, as area manager, Sir has worked with Wipro Chemicals too. In the year 2019, at a very young age, I must say,
Sir started his own startup as Green Revolution. He invented IPM trap, which is world's first economic trap for catching fruit flies, and has gained its design patent in 2015. With great enthusiasm and spirit, presently Sir is continuing the research on economic IPM tools for farmers and for the benefit of mankind. Sir has a very youthful and charming personality as well. We are grateful to have you here, sir. Our audience is awaiting to listen to you. So now I would like to request sir to join the podium and address sir. I hope you are here, sir. I hope you can hear me. Welcome, sir. Okay, thank you, Just Agriculture, and thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, Please continue, sir. yes. So basics कि इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, जैसे कि अभी हम पेस्टिसाइड मार के जो इंसेक्ट को किल कर देते हैं, तो आईपीएम टूल्स एक पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर में जो है आईपीएम टूल्स, तो आईपीएम टूल्स में मोस्टली है कि इंसेक्ट कंट्रोल करना और उसको प्रोडक्शन कॉस्ट, अपना जो फार्मर प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट. Excuse me, sir. Can you put your camera video on, sir? Yes, sure. Just Yeah. a second. Thank you, sir. Okay, it's okay. Yeah, it's perfect, sir. ओके तो जैसे कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मोस्ट ऑफ द पार्ट है कि जो आईपीएम टूल्स यूज करना, जैसे कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो आईपीएम टूल्स है, तो इसमें हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में काम कर लेते हैं. जैसे कि हर एक फसल में स्पेसिफाइक कीड़ा आता है. जैसे कि मान लीजिए कि हम बैंगन का एक एग्जांपल लेंगे. बैंगन में मोस्टली प्रॉब्लम आता है कि फार्मर को कि उसमें बैंगन में कीड़ा लगता है, तो बैंगन में जो कीड़ा लगता है वो स्पेसिफिक टारगेट वाला कीड़ा रहता है, जैसे कि उसको लुसिनोर्स अरबिनाल बोलते हैं. तो ऐसा जो स्पेसिफिक इंसेक्ट को स्पेसिफिक कंट्रोल करना का मेथड है, तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. ओके, तो इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा स्टार्टअप हुआ 2014 में स्टार्ट हुआ. जो जैसे कि बिहाइंड स्टार्ट करने का वजह ये था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट फार्मर का कैसा घटाया जाए. अभी रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है कि क्लाइमेट चेंजिंग का एक इशू सबसे बहुत बड़ा चल रहा है. क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से इंसेक्ट प्रॉपर कंट्रोल नहीं होते, और हर एक दवाई छिड़का के उसका इंसेक्ट का रजिस्ट्रेशन पावर बढ़ गया है. तो प्रॉपरली इंसेक्ट कंट्रोल होना मुश्किल है. यस, मेरा आवाज सभी तरफ आ रहा है सबको? Yes, sir. You are audible, sir. यस. तो इसमें जो आईपीएम मेथड्स में लॉट्स ऑफ क्रॉप के लिए हम वर्क करते हैं, जैसे कि मेज है, शुगर केन है, बैंगन है, ग्राम है, सोयाबीन है, टी गार्डन है, कॉफी गार्डन है, जो मोस्टली अराउंड 100+ इंसेक्ट फेरोमोन्स के लिए काम करते हैं. जैसे कि अभी क्लाइमेट का चेंजिंग का जो भी एक इफेक्ट है, मैम मेरा एक पीपीटी शेयर कर देंगे, मैं यहाँ पे शेयर एक सेकंड. Are you able to do, sir? Yes, just a second. No, can you share me? Share me. Okay, sir. तो जैसे कि अभी पीपीटी जैसा स्लाइड्स शेयर हो जाएगा, हम उसके बाद टॉपिक के बाद आपको पता चला कि विजुअलाइजेशन के इफेक्ट्स है कि एक्चुअली आईपीएम टूल्स कितना इंपॉर्टेंस है. जैसे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जैसे नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं अभी, तो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेस ऑफ द टूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है फेरोमोन्स. एक्चुअली फेरोमोन्स एक पर्टिकुलर इंसेक्ट का स्मेल, जो आर्टिफिशियल इंसेक्ट का स्मेल रहता है, उसको अट्रैक्ट करके इंसेक्ट ट्रैप किया जा रहा है. मैम यस, ओपन हो? Hello. हाँ मैम, पीपीटी थोड़ा. Yes, sir. Yes, sir. Just working on that, sir.
यस यस ओके। तो अभी एक्चुअली हमारे एग्रीकल्चर लैंड में सबसे दिक्कत प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है बहुत सारा, लेकिन लैंड होल्डिंग बढ़ा नहीं है। जैसे कि अभी बहुत सारे फार्मिंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग में कर रहे हैं, हाइड्रोफोनिक्स कर रहे हैं, लेकिन लैंड एक्वायर उतना ही है। जैसे प्रोपोर्शनेट में पिछले 10 साल के पहले हमारा जितना पॉपुलेशन था तो उसको हम इजीली फूड सर्वाइव कर सकते थे। तो अभी रिसेंटली जो चल रहा है कि फार्मर प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई चल रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग का भी पार्ट बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, एज वेल एज इसके साथ में चल रहा है कि इंसेक्ट कंट्रोल करना, मतलब तो एक्सक्यूज इस मी सर, यस सर आपने हमारी टीम के साथ पीपीटी शेयर करी है? हाँ यस यस क्या है उत्कर्ष with उत्कर्षा मैम। ओके सर, ओके यस सर, we'll share. सर आप कंटिन्यू कीजिए, हमारी टीम पीपीटी शेयर कर देगी। हाँ यस मैम। नहीं बहुत नहीं, हाँ यस सॉरी। तो इसके अप्रोच के लिए हम इंसेक्ट फेरोमोन ट्रैप्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि इंसेक्ट ट्रैप फेरोमेन्स मीन्स क्या रहता है कि जैसे कि हमारा मेल और फीमेल रहता है, तो वैसे ही इंसेक्ट में मेल और फीमेल दो इंसेक्ट रहते हैं। तो पर्टिकुलर फीमेल का इंसेक्ट का स्मेल एक आर्टिफिशियल लूर में हम लगाते हैं, जैसे उसको फेरोमोन बोलते हैं। तो ये फेरोमोन प्लम के स्मेल से मेल इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं। ये Excuse सिंपल me, सा sir. मेथड है, लेकिन इसको सर कैसा लगाना है, कौन से टाइम। यस एक्सक्यूज यस मी सर, यस यस sir due to some technical issues, Utkarsha ma'am is not able to share your PPT, so can you please share from your end? जस्ट सेकंड होल्ड ऑन। Yeah, sure sir. Sir, either you can share or you can resend to our new mail ID. Sir kindly make it full screen. Hello. Hello. So are we connected? हाँ किसी I request the audience to please keep patience for. यस Yeah, yeah. स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम। Yeah. It's visible, sir. It's visible. Please make it full screen, sir.
Yes, okay. तो भी आईपीएम अप्रोच अपना आईपीएम अप्रोच हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं अभी, जो मेनली हमारा फोकस है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेन सब्जेक्ट है अपना। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आईपीएम टूल्स कैसा यूज Sir? करना है। यस यस मैम। Sir, I think it's not there in full screen yet. Can you please make it to full screen? Just a second. Yes, right. It's working, ma'am. I could not see actually. Let me No, just sir, check. it's not on screen share mode. Yes, screen share mode is active, ma'am. Himani ma'am, shall we No continue problem, with go ahead. this? Yeah, If it is visible, yeah. continue So with. please continue. So please It's continue. visible, na? Yeah, it's visible. Yes, 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 yes. तो आईपीएम अप्रोच हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए देख रहे थे कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, सो मेनी फार्मिंग जितने भी हम कर लेते हैं, जैसे कि केमिकल प्रैक्टिसेस के तरफ से भी फार्मिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर में है कि पेस्ट मैनेजमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि अभी ग्लोबल का पेस्टिसाइड यूज देखना है तो हम नियर अबाउट 84 बिलियन डॉलर्स इतना हम पेस्टिसाइड के ऊपर खर्चा कर लेते हैं खाली स्पेसिफिक इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा ट्रैप लगाना चाहिए, कौन सा स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, उसके वजह से कितना बेनिफिट्स होता है। ये सभी हम आगे आगे जाके हम जान लेंगे कैसा कौन सा ट्रैप है, क्या है, उसके लिए मेथड्स क्या रहेगा, सभी वन बाय वन हम मेजर कर लेंगे। तो जैसे कि हम ग्लोबल पॉपुलेशन का भी अभी लास्ट टाइम दिखा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन हमारा बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है, और उनका फूड डिमांड भी बड़ा है। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज ये फूड सप्लाई हमें मेंटेन करने के लिए फार्मर का प्रोडक्शन कॉस्ट मेंटेन करना जरूरी है। तो आईपीएम फार्मर्स से हमें एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखा है कि फार्मर्स लेस टू ड्यू इंसेक्ट पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, सेफ सस्टेनेबल है, ये सभी बहुत सारे। अभी एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट का है। मतलब इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जैसे कि स्पेसिफिक इंसेक्ट कंट्रोल करने दवाई हर एक फार्मर को पता नहीं रहता है, उसका एक हमें काम करना पड़ेगा। और जैसे कि एक आधा केमिकल पेस्टिसाइड हमने यूज किया है उसके फार्मर ने प्लांट के ऊपर, तो हमें पता नहीं रहता कि उसका रेसिड्यू टाइम कितना है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारा भी देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स अदर देन डिसीज कितना बढ़ रहा है। ये बहुत सारा इम्पैक्ट ये आईपीएम टूल्स सरल तरह से नहीं यूज करने का इम्पैक्ट है बहुत सारा। और इम्बैलेंसिंग इकोसिस्टम का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब जैसे कि हम एक दवाई पेड़ पर पौधे पर छिड़काते, उसका 100% तो पौधा नहीं लेता, जो सॉइल में जाता है, सॉइल की तरफ से फिर पानी में आता है, वही पानी हम लोग सभी पीते हैं। तो सॉइल में पानी जाने के बाद फिर से वो वहां पे जाने वाला बैक्टीरियाज रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे, छोटे छोटे बैक्टीरियाज रहेंगे, वो पूरा किल हो जाते हैं और वही टॉक्सिक पानी हम पी के फिर आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम आना क्रिएट चालू होता है। तो इजीली इसके लिए सॉल्यूशन सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इंसेक्ट फेरोमोन्स मेथड्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि एक इंसेक्ट आ रहा है, वो पानी का वो बकेट रह दिया है, बकेट के अंदर वो गिरा है, फार्मर भी खुशहाल हैप्पी है। तो ये मेन बेसिकली क्या है कि फेरोमोन ट्रैक स्पेसिस फेरोमोन्स अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका लॉन्गेविटी भी ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिएगा हम बैंगन का एक खेत है, बैंगन का खेत तकरीबन जैसे फ्रूट निकलना चालू होता है लगभग 4 या 5 महीने तक वो फ्रूटिंग चलता है आराम से। तो 4-5 महीने तक फ्रूटिंग के लिए ड्यूरेबिलिटी हमें उतना प्रोडक्ट इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाला कोई सा भी इंडस्ट्रीज में अभी दवाई नहीं है। मतलब एक स्पेसिफिक इंसेक्ट जैसे कि थ्रिप्स हो गया, एफिड्स हो गया, तो इसके लिए मारने के बाद फिर फार्मर्स अप्लाई कर लेते हैं कि 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर एक स्प्रेइंग लेता है। तो बैंगन में जो कीड़ा लगता है लुसिनोड सर्बिनल, उसके लिए जब हमने ट्रैप लगाया, सिंपल मेथड है, एक 20 रुपए का या 50 रुपए का गोली लूर्स आता है,
और ट्रैप एक 100 रुपए का है, तो 1 एकड़ में कम से कम हमने 10 ट्रैप लगाना चाहिए। तो इस मेथड से जितना भी उसको स्पेसिफाइड, मतलब मोस्टली बैंगन का सबसे नुकसान करने वाला है, अदरवाइज प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने वाला एक इंसेक्ट है कि लूसिनोड्स, तो उसका हम 80 to 90% हम कंट्रोल कर लेते हैं ये मेथड से। बाकी हमारा विजन मिशन तो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का हमें बनाना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रेजेंट करें, लेकिन हमारा मिशन यही कि हर एक फार्मर में फेरोमोन ट्रैप्स लगाना चाहिए, उसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहिए और उसके बारे में बिल्टअप होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चनिंग आंसर की तरफ से चलेंगे मैम। हेलो। ओके सर, ओके सर। हाँ, कुछ मतलब थोड़ा क्वेश्चनिंग आंसर की तरफ से चले तो Sir, बहुत सारा we will इजीली ask हो the जाएगा, question in the क्योंकि बेसिकली जो फेरोमोन्स वर्क कैसा होता है, अदरवाइज फेरोमोन्स क्या है, क्योंकि हमारा Actually, सब्जेक्ट। हाँ, actually, yes. sir, chat box is actually open for discussion. So, but nobody has kept any question yet. So, can we continue the session and at the end, Yes, can we yes. keep the questions? Yes, yes, sure. Okay. Yeah. Okay, sir. ओके, तो ये फेरोमोन ट्रैप्स की वजह से हम तकरीबन हर एक, मतलब इंडिया का देखा तो 1%, बिलो 1% हम फेरोमोन ट्रैप्स यूज करते हैं, आईपीएम टूल्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम, मतलब एक 20-25 साल पहले हमारे इतना पेस्टिसाइड यूज नहीं था, लेकिन वहाँ पे एनवायरमेंटल या सभी क्लाइमेटिकल कंडीशन अच्छा था, बायोडाइवर्सिटी अच्छा था सभी। तो ये इंसेक्ट एक के ऊपर डिपेंड था, मतलब एक जीवन चक्र था, हर एक इंसेक्ट इसको खाएगा, वो खाएगा। तो इसके बीच में हमने पेस्टिसाइड यूज करने के बाद बहुत सारा लाइनअप खराब हो गया। और अभी जस्ट हमारा चल रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बीटी आ रहा है, जीएमओ सीड्स आ रहे हैं, बहुत सारे हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड्स के लिए इंसेक्ट कंट्रोल करना इतना पॉसिबल नहीं होता, मतलब उसको न्यूट्रिशन भी हेवी चाहिए, वो फूड भी हेवी देगा, लेकिन वो इंसेक्ट अट्रैक्ट भी हेवी कर लेता है। बेसिकली ये फंड है, तो ये फंडे के लिए हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेथड समझना चाहिए कि कैसा इंसेक्ट है, उसको लिए क्या कंट्रोल करना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बाकी मार्केट के प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट्स में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कि कैसा है, मतलब जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं और फेरोमोन ट्रैप्स यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये फेरोमोन ट्रैप्स इकोनॉमिकल और इजी हैंडलिंग रहता है। जैसे कि एक फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में लगाया तो 1 एकड़ में कम से कम 10 या 15 ट्रैप्स लगाना चाहिए। ये 45 डेज तक काम करेंगे, मतलब ये इंसेक्ट ट्रैप लगाने के बाद वो 24 आवर्स वर्क करेगा इनटू 45 डेज, मतलब उसको नहीं, टाइम नहीं है, मतलब वो सुबह ही मॉर्निंग काम करेगा, इवनिंग काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी 40 दिन तक 45 डेज तक जितना भी इंसेक्ट आएंगे, वो इंसेक्ट पूरा वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा बात है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। इको फ्रेंडली मीन्स जो हम फेरोमोन्स लूर्स बनाते हैं वो सॉइल में भी नहीं डालना है, अदरवाइज पौधे पर भी नहीं छिड़काना है। तो इसका केमिकल इफेक्ट भी नहीं होता दोनों जगह पर। प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जैसे कि शुरू में हम 25-30 डेज का प्रोडक्ट शुरू में मार्केट में मिलते थे, हमने इन्वेंट किया और थोड़ा उसका लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्शन भी बना है, मतलब उसका कैपेसिटी भी बना है। तो इसके साथ साथ हम आईपीएम स्कूल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि फार्मर कोई लगाता है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्रॉप चाहिए, तो इसके लिए बैकएंड सॉल्यूशन भी हम बताते हैं, ताकि आसानी से जो भी हमारा प्रोडक्ट फार्मर प्रोडक्शन कॉस्ट इकोनॉमिकल सेविंग पूरा अच्छी तरह से हो जाए उसका। तो हम बहुत सारे आईपीएम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, हर एक जिला में लेते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र के, अदरवाइज एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, वहाँ पे जाके स्पेशली आईपीएम टूल्स, जैसे हर एक जगह पर कोई तो क्रॉप पैटर्न रहता है, जैसे कि कॉटन का क्रॉप पैटर्न है, शुगर केन है, फेरेस वेजिटेबल का क्रॉप पैटर्न है। तो उसी तरह वहाँ जाके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, सबको हर एक को इंफॉर्मेशन देते हैं कैसा करना है, क्या करना है। फील्ड डेमो सेशन है ऑनलाइन, या अपना यूट्यूब के यहाँ पे मार्फत आपको मिल जाएगा। और मेजरली हम जितने भी श्रोता हैं उनको
इनवाइट करना चाहते हैं कि हम फार्मर कंपटीशन भी देते हैं। फार्मर कंपटीशन मतलब इंफॉर्मेशन बेसिकली रहता है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन देना है हमें, जैसे कि हम क्यूज डालेंगे, क्वेश्चंस देंगे, तो उसी हिसाब से रिवर्ट करने के बाद उनको एक सिलेक्टेड फार्मर भी हम अनाउंस कर देते हैं और ट्रॉफी अदरवाइज सर्टिफिकेशन उनको हमें डिस्काउंट भी प्रोडक्ट हम दे देते हैं। ये हमारा थोड़ा सा वर्किंग प्रोफाइल है कि फील्ड में हम क्या काम कर लेते हैं क्योंकि अभी जितने भी शॉपकीपर्स है, डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आईपीएम टूल्स खरीदना नहीं चाहते। मतलब ये बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, क्योंकि इनको बहुत सारा प्रॉफिट मार्जिन कम मिलता है। जैसे कि अभी 45 डेज तक एक कीड़ा कंट्रोल कर सकता है हमारा ट्रैप्स, मतलब एक 10 ट्रैप 40-45 दिन तक पूरा खेत का रक्षण कर सकता है, रखवाला है वो। तो कम से कम ये 4-5 स्प्रेइंग का एप्लीकेशन उसका डीलर्स का है वो रुक जाता है। मतलब एक दुकानदार कम से कम एक स्प्रे का मान लीजिएगा मोटा मोटा एक 2000 रुपये रहेगा, तो 5 स्प्रे का कम से कम 10,000 रुपये रहेगा। तो 10,000 रुपये वो सेविंग के बिजनेस के लिए हमारा 1000 रुपीज का ट्रैप बेचना नहीं चाहता। ओके, तो हर एक फार्मर ने, अदरवाइज हर एक किसान ने उसको जानना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप्स एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वर्क कैसा करता है, हम इतना हमारे खुद के खेत में कितना इफेक्टिव रहेगा। ये बहुत सारे मैटर्स है, वो आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो इसमें हमारा जो अचीवमेंट का थोड़ा सा एक पेटेंट एक ट्रैप पेटेंट का हमारे है और बाकी 4 ट्रैप पेटेंट प्रोसेस में चल रहा है। हमारा एक कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट मैनेजमेंट देवचंद कॉलेज, यहाँ पे हमारा एमओई हुआ है। जो एजीपीएम डिपार्टमेंट के लड़के हैं उनका लैब्स एवरीथिंग्स हम यूज करना है, उनको उनके लड़कों को एजुकेशन करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है। इस सब से क्या है, लास्ट एसबीआई आ रहा है त्रिपुरा से हमें नेशनल लीडरशिप भी अवार्ड मिला था। अभी हम थोड़ा सा मॉनिटर और मास ट्रैपिंग की तरफ से निकलते हैं। जैसे कि शुरू में हमारे खेत में अदरवाइज यूनिवर्सिटी प्रेफर करते थे कि पर एकड़ में कम से कम 3 ट्रैप लगाओ, 4 ट्रैप लगाओ। ये 3 और 4 ट्रैप लगाना अभी के टाइम में इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंसेक्ट का पॉपुलेशन हाईली रैपिडली स्पीड हो रहा है। जैसे कि इस साल इंसेक्ट का पॉपुलेशन 100 है, तो नेक्स्ट ईयर वो +20 या 30% नेक्स्ट हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो मॉनिटरिंग, अदरवाइज हमारा आर&डी बैकअप टीम है, तो उनके तरफ से पूरा हमने जानकर से एक मॉनिटरिंग ट्रैपिंग सिस्टम के लिए हम कम से कम 8 या 10 ट्रैप पर एकड़ में लगाना रिकमेंडेड करते हैं। इसने 10 ट्रैप में कम से कम 20 या 30% तक प्रोडक्शन फार्मर, मतलब जो लास्ट एंड ऑफ द फ्रूट कॉस्ट का है, जो 20 या 30% तक सेविंग हो जाता है। और जो पॉपुलेशन इंसेक्ट का पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट हम 50+ उसको रिड्यूस कर देते हैं। अभी मेनली क्या होता है कि मॉनिटर और मास ट्रैपिंग, ये दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चाहिए। जैसे कि हमारे खेत में कीड़ा लगा है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से बहुत सारा इंसेक्ट का ही इन्फेस्टेशन बहुत सारा बड़ा होता है, तो इसके लिए हम मास ट्रैपिंग लगाना चाहिए। तो मास ट्रैपिंग क्या रहता है कि मैक्सिमम इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम ट्रैप हमारे खेत में लगने चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, मिनिमम 20 to 25। अभी लास्ट टाइम हमने क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में पुना रीजन में जो टोमेटो का यील्ड था, तो टोमेटो को फील्ड में हम टूटा लीफ माइनर का हेवी अटैक हुआ था। तो इतना बड़ा आउटब्रेक इंसेक्ट का होता, तो वहाँ पे फार्मर ने एटलीस्ट 40 या 50 ट्रैप्स लगा के उसको कंट्रोल कर दिया। वो ना एवरीथिंग कौन से भी केमिकल से, अदरवाइज लेबल क्लेम पेस्टिसाइड से भी नहीं कंट्रोल हुआ, तो ये फेरोमोन ट्रैप से वहाँ पे अच्छा 100% उनको कंट्रोल मिल गया। तो इसमें बहुत सारा मास ट्रैपिंग जैसे भी फार्मर करते हैं, मतलब मॉनिटर कर रहा है तो 20-30% लेगा, और मास ट्रैपिंग कर रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट 60-70, मतलब 80% वो प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम कर देता है, मतलब बहुत सारा। और ये ट्रैप एक बार लगाने के बाद हम रीयूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। पॉपुलेशन डिक्रीज भी होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिएगा उसी एरिया में वहाँ का इंसेक्ट ऑलमोस्ट 90% वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में फीमेल के लिए मेल अट्रैक्ट होता है और मेल सब अटक जाते हैं, तो मेटिंग नहीं होगा। मेटिंग नहीं होने के बाद वो पूरा साइकिल उनका ब्रेक हो जाएगा।
प्रोडक्ट रेंज वाइड है, यहाँ पे आपको हर एक थोड़ा सा देखेंगे। हमारा ब्रांडिंग है, हम एक खेत के रखवाले, तो ऑब्वियसली हम खेत में जो ट्रैप लगाते हैं वो खेत का रखवाला ही है, उस हर एक तरफ से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके ट्रैप कर लेते हैं। रिसेंटली हैविंग फेरोमोन्स में हमारे पास 100+ फेरोमोन्स है, जैसे कि एक्सपोर्ट मार्केट का है, लेकिन इंडिया में अराउंड एक 20-25 प्रोडक्ट्स इंडिया में रेगुलर प्रोडक्शन मतलब सप्लाई होता है हर एक क्रॉप के लिए। यस, थैंक यू। और कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ मैम। Thank you, sir. Thank you so much for such a wonderful session. Actually, IPM is definitely a critical component for sustainability of our many like agroecological systems. Yes, and definitely the traps that you have prepared are economically feasible, and yeah, definitely you deserve a big thanks. On the behalf of Team Just Agriculture and our participants, I thank you once again. You are truly an inspiration to all of us. Now, actually, we have some questions in the chat box, so I will proceed with the questions, sir. Okay, so please. first question is from somebody who is asking, like, use of pheromones are compatible with chemicals or not? So what's your take on this aspect, Yes, sir? is a actually pheromones using semiochemicals. Okay, and agriculture practices there now is a farmers end up they using the pheromone traps, and as well as with me using these chemical components. It's okay, but is a practices farmer is knowing in which trap which trap install in our farm as a refer specific crop required means जैसे कि हम चना में ले रहे, चना में इले का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि चना खा लेता है, तो इसके लिए स्पोडोप्टेरा लगाना है या हेलिकोर्पा लगाना है। तो राइट आंसर है कि हेलिकोर्पा आर्मिकरा ये इंसेक्ट का लूर हमें लगना चाहिए, तो हेली लूर लगाइए और फनेल ट्रैप्स लगाइए। और अदर देन जो अदर इंसेक्ट के लिए कंट्रोल करना है तो हमें स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं, एंड एज वेल एज सेक्वेस्ट ट्रैप के साथ हम केमिकल स्प्रे एप्लीकेशन कर सकते हैं। यस, Okay, thank you, sir. So our Yes. next question is, in which parts of India your company is working? Basically we are located in Maharashtra, Kolhapur district. Okay, we are my rural area is Nanda, is located factory and R&D center in rural area in Maharashtra state. Okay. Okay. Yes. Okay. So another question from somebody is, can we control pests belonging from different families using pheromone traps? For different type of pests, we have to use different type of traps or the same trap? Like, I think you answered, but maybe like you can elaborate. Yes, different type species like that. We have control thrips, aphids, justids, and many sucking pests. So using a sticky trap, yellow sticky trap, otherwise blue sticky trap, he easily control to others sucking pests. Okay, and specific target manual is we facing the problem in coffee berry borer. Okay, coffee berry borer is a specified trap required to coffee berry borer. Other than is a sticky trap and yellow sticky trap, blue sticky trap. Other than minor insect, otherwise small sucking pest insect control their sticky traps. Yes, ma'am. Okay, okay. So the topic that you have taken is definitely a debatable question, and we can talk like long hours about this. But due to Yes. time constraint, I have a last question for you to ask. Yes, so how please. can we motivate our farmers to use pheromone traps rather than going for the use of chemicals? Yes. ओके, जैसे कि मैं शुरू में बताया कि जैसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम एक शिमला मिर्च है, अदरवाइज मिर्च पर एक स्प्रेइंग कर रहे, तो स्प्रेइंग करने के बाद वो फल में कितना दिन तक पेस्टिसाइड रेसिड्यू रहता है, ये जो लैब एनालिसिस का जो मैटर है। अदरवाइज प्रोडक्ट हम पेस्टिसाइड का लेवल क्लेम जो हम देखते हैं, तो उसका एक बार देखने के बाद कितना टाइम तक, मतलब 20 डेज है, 12 डेज है, 10 डेज है, ये रेसिड्यू का टाइम हमें पता चला तो फार्मर को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई नहीं, हम गलत कर रहे हैं। मतलब हमें जैसे कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप, सकिंग पेस्ट के लिए हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है। व्हाई यू इंसेक्टिसाइड स्प्रे ऑन दिस इंसेक्ट्स यूजिंग द स्टिकी ट्रैप? स्टिकी ट्रैप जैसे हम लगाए तो उसके वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगा ना उनका, और पेस्टिसाइड का डोज भी हम कम दे सकते हैं। जैसे कि हम सकिंग पेस्ट के लिए रिपीटेड 1 या 2 स्प्रे लेते हैं, तो अदर देन हम स्टिकी ट्रैप यूज किया
तो 2 या 3 स्प्रे लेने की जरूरत नहीं, खाली 1 या 2 स्प्रे में हम उसको क्लीन कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। एक स्प्रे हम बचा सकते हैं, एक स्प्रे मतलब उसका अमाउंट भी उतना बचा, और एज वेल एज जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है उसको अभी हम कंट्रोल करते हैं। जो फूड टॉक्सिक का मामला समझ जाएगा, जैसे कि हम हर एक गांव में, हर एक सिटी में जितना भी पॉपुलेशन, मतलब कैंसर है, अदरवाइज अदर डिसीज जो बढ़ रहा है, इसका जो बिहाइंड कॉजेस देखा, तो ये फूड के वजह से, और उसको थोड़ा सा जान ले तो फेरोमोन के लिए हम सब मोटिवेटेड हो जाएंगे, और हर एक बंदा यूज करना लेगा, और इजी मेथड से, ऐसा कुछ ज्यादा उसको नहीं है। यस मैम। Okay, sir. Okay. With this, sir, I would like to conclude, and I would like to thank you once again for giving such a brief and like calculated information on this topic. And I would like to thank on the behalf of Just Agriculture once again. Thank you. So now I would like to hand over the podium to Himani ma'am to proceed with the next session. Yes. Also, I am sharing my contact number and as well as a mail ID. If any requirement is a contact number and Thank you, Dr. Preeti and sir. Am I audible to you, Dr. Preeti? Am I audible to Himani you? ma'am, continue. Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Preeti, and thank sir. So moving ahead, I would like to invite our next speaker, Dr. Deepak Jain. Dr. Deepak Jain is economic policies advisor and industrialist, and he is the director of Federation of Indian Industry. President of the Koyala Foundation, India chapter. Dr. Jain has also served as president of Laghu Udyog Bharati and director of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited from 2014 2019 and from 2015 2017 respectively. Dr. Jain has also served as chairman of Economic Advisory Council on Economic Affairs (BJP) from 2015. So I welcome you, sir, to this virtual podium and enlighten our participants with your knowledge. So over to you, sir. Hello. Ma'am, you are not audible. Sir, am I audible to you? Himani ma'am, you are not audible properly. Kindly rejoin. Okay, sir. Hello. Thank you, sir. Thank you for the joining. Just wait, our host will rejoining the session. So you are sharing the presentation on your side? No. Okay, sir. Should I start? Yeah, sir. You can start, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Hello, sir. Am I audible now? Hello. जी. Yes, sir. Sir, I'm audible to you? हाँ, आपके सुनाई दे रही Yes, है. sir. Sir, I'm so sorry for the technical problem which has just happened.
I would like to welcome Dr. Deepak Jain, sir. Sir is an economic policies advisor and industrialist, and he is the Director General of Federation of Indian Industry. Sir is national spokesman and working president of Digambar Jain Mahasamiti, and he is also the president of GP Koirala Foundation India chapter. Dr. Jain has served as state president of Laghu Udyog Bharati Haryana and director of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited from 2014 to 2019 and 2015 to 2016 respectively. And Dr. Jain has also served as chairman of Economic Advisory Councils on Economic Affairs (BJP) from 2013 to 2015. So, sir, I welcome you to grace this virtual podium and enlighten us with your knowledge. So, with this, over to you, sir. थैंक यू एंड नमस्कार। मैं नमस्कार सर। आज आप सबके बीच में हूँ, भारत से नहीं लेकिन अमेरिका से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा पहले आ गया था ताकि मैं सबकी बातचीत सुन सकूं, और मैं एक विद्यार्थी के नाते इस मीटिंग को ज्वाइन किया था काफी समय पहले और सुन रहा था। तो मुझे लगा कि अगर टाइम डिफरेंस नहीं होता तो मैं पूरा सेशन, आपका 4 बजे से शुरू हुआ था, मैं ज्वाइन कर सकता था। खैर, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे बीच में हैं और हम सब उनकी बातों को सुन करके एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हम कर सकते हैं वो चिंता कर रहे हैं देश के विषय में, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास आज एक अवसर दिया है हमको जस्ट एग्रीकल्चर ने कि हम एक मंच पे इकट्ठे होकर के, करीब 650 लोग हम इकट्ठा हैं और एक मंच पे हम अपनी बात कह सकते हैं। ये कोरोना काल की देन है कि हम तकनीक का सहारा लेकर के अपनी बात कह सकते हैं और सारे देश के बीच में, सारे विश्व के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी आपका लाइव हो रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का कोई काम नहीं था आज यहाँ होने का, क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारा क्या काम एग्रीकल्चर में। मैं थोड़ा सा परिचय आपको दूंगा फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। 2013 में हमने अपनी एक्टिविटीज चालू की। आज इंडस्ट्री के 5000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। 42 देशों में हमारे चैप्टर्स हैं और 150 देशों के एनआरआईज, ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी, उन सबको हम जोड़ के रखते हैं अपने न्यूज़लेटर के माध्यम से। 22 इंडियन स्टेट्स में हमारे चैप्टर्स हैं और 15 वर्टिकल्स हैं। पॉलिसी एडवोकेसी में हमने बहुत काम किया है, जिसमें वॉलंटरी डिस्क्लोजर, डीमोनेटाइजेशन, गोल्ड बॉन्ड स्कीम, हेल्थ केयर फॉर पुअर पीपल, हार्ट केयर स्कीम, कैंसर केयर स्कीम। अभी पाटिल जी ने भी जिक्र किया कैंसर के विषय में। कैंसर तो मैं मानता हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज की और भारत सरकार की गिफ्ट है आम आदमी को, जो फसल के साथ, अनाज के साथ फ्री में आम आदमी को जाती है। और एक बड़ा दिक्कत का कारण मैं देख रहा हूं कि हम एक एक कंपार्टमेंट के अंदर बंद हैं। आज एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करता है। इंडस्ट्री वाला है, सिर्फ इंडस्ट्री की बात करता है। कंबाइन हम देश की बात नहीं करते। हम मिले हैं एक मंच पे, तो ये सोचना होगा कि हमारी जीडीपी की कंपोजिशन क्या है। 20% के करीब एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें 36 लाख करोड़ की
कंट्रीब्यूशन आ रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 26-27% है, जिसमें 46 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशन आ रही है। सर्विस सेक्टर 54% है, जिसमें 97 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशन आ रही है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारी आ रही है और इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो है हमारा, तो हम कंपार्टमेंटल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं? हमको क्रॉस थिंकिंग करनी पड़ेगी, और क्रॉस थिंकिंग के कारण से जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो देश के लिए फायदेमंद होंगे। अभी ये देखिए, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 11-12 करोड़ अदारे उसके अंदर हैं और काफी एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर है। सर्विस सेक्टर 12 से 15 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 80 करोड़ लोग मानते हैं इन्वॉल्व हैं। तो इतना डाइवर्स पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टोरल है, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सोचने का। हमको मिक्स करके अपने थिंकिंग को सोचना पड़ेगा कि टोटलिटी में देश की इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। अभी मैं कुछ फिगर आपके सामने रखूंगा, आपको थोड़ा ध्यान में आएगा। ये डाइवर्सिटी हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.25 लाख करोड़ के करीब जो पहली एक्सपोर्ट थी, और वो आज बढ़कर के 4 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट हो गई। प्रोसेस्ड फूड की एक्सपोर्ट 41,000 करोड़ है। अब आप गैप देखिए, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक्सपोर्ट टोटल में 4 लाख करोड़ और प्रोसेस्ड फूड की 41,000 करोड़। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और यही डिफरेंस एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम जो प्रोसेस्ड फूड की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, जितना हम चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। यहाँ दूसरे देशों में सभी देशों के लोग लगे हैं किस तरह से प्रोसेस्ड फूड की एक्सपोर्ट उन देशों को बढ़े, और इसके अंदर हमारे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी डाउन साइड हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे 11 करोड़ एंटरप्राइजेस थे, अंदाजन 30% हिट हुआ है उसके अंदर कोरोना पीरियड में, और 3 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स दे आर आउट ऑफ जॉब, आउट ऑफ बिजनेस। अब हम दो अलग अलग तरह से सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा विकास कैसे हो। ओवरनाइट हम किसान को एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन नहीं बना सकते, प्रॉब्ली 10 साल 15 साल का समय लगेगा। और इधर जो एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ बिजनेस है, आउट ऑफ जॉब है, उसको ओवरनाइट हम किसान नहीं बना सकते। तो एक मिसमैच सा हो गया। समझदार इकोनॉमी में हम इन दोनों में एक सिनर्जी की तलाश करेंगे कि हमारे एंटरप्रेन्योर और हमारे किसान के बीच में कैसे सिनर्जी आ सकती है। एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करना आता है, किसान को बिजनेस करने में थोड़ा हाथ तंग है। एंटरप्रेन्योरशिप का लाभ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उठा सकते हैं। और हम थोड़ी सी फिगर्स की ओर देखें, हमारे पास आज 45,000 डिग्री कॉलेजेस हैं सारे देश में, 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 1,500 के करीब टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। इन 46-47 हजार इंस्टीट्यूट्स में
एक एक इंस्टीट्यूट में एक एक दो दो कोर्स भी अगर हम डालते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर को रीओरिएंट करेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ, तो साल भर में 2 साल के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे ट्रेन हो करके एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स पकड़ लेंगे, जिनको वो व्यापार में भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट में भी ले सकते हैं। और ऐसे ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग के अंदर एडवांटेज देना चाहिए सरकार ने, और उस एडवांटेज में जो करंट फंडिंग का लॉट है, यानी 1,31,500 करोड़ के करीब करंट बजट की एलोकेशन है, इससे अलग एलोकेशन देनी चाहिए इन ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि इजीली वो ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस एग्रीकल्चर के फील्ड में बैठा सके। एक बार फेल हो गया इंडस्ट्री में, कोई बात नहीं, इट वाज नॉट उसकी अपनी करने का फल नहीं था, परमात्मा ने या दूसरे देशों ने जैसा चाहा, इंडस्ट्री थोड़ी बहुत झटका लिया है, तो उसको देखते हुए उसको फिर एक बार जीवन में खड़े होने का मौका मिलेगा। क्योंकि छोटा एंटरप्रेन्योर ऐसा तो है नहीं कि 10 जगह उसके व्यापार चल रहे हैं, एक ही जगह उसका व्यापार चलता है, उसमें तन मन धन अपना घर भी गिरवी रख के वो बिजनेस करता है, अपनी वाइफ के जेवर भी गिरवी रख के बिजनेस करता है, बड़ी मुश्किल से वो बिजनेस कर पाता है। और ऐसे में झटका झेलना उसके बस का काम नहीं है। सरकार अगर सपोर्ट करे तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 3 करोड़ से अधिक आज देश में उपलब्ध हैं, जो बिजनेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं। और ये 41,000 करोड़ों की जो फिगर है एक्सपोर्ट की, ये बढ़ करके 2 लाख करोड़ पे जा सकती है इजीली, क्योंकि उनको व्यापार करना आता है। कुछ टारगेट भी हमको बांधने पड़ेंगे, यानी एडिशनल फंडिंग का क्या टारगेट हम लेकर के चले, जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आ रहे हैं, कि इनको एडिशनल फंडिंग हम कितनी दे सकते हैं। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, ऐसा कुछ, जैसे मुद्रा के अंदर हमने टारगेट बांध करके बैंकों को कहा है कि आप मुद्रा लोन दीजिए, इसी प्रकार से किसान मुद्रा लोन भी उनको लाना चाहिए कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको किसान मुद्रा लोन में 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसा कुछ टारगेट बांध करके चलें। मुद्रा लोन का हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है, फेलियर कम है। इसी प्रकार इसमें भी, किसानी के फील्ड में भी, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनकी फंडिंग करते हैं, इसका फीडबैक भी देश में अच्छा रहेगा। आज पर एकड़ एग्रीकल्चर यील्ड अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से है, लेकिन हमको टारगेट रखना चाहिए कि पर एकड़ हम यील्ड को बढ़ा करके 1 लाख रुपया प्रति एकड़ से अधिक लेकर के जाएंगे। वो किसान की अगर आमदनी हम बढ़ा करके चलते हैं तो एक बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट सारे देश की इकोनॉमी पे आएगा। और हम देखेंगे कि जो आज आउटपुट हमारी बिलो 20% है, वो आउटपुट बहुत जल्दी बढ़ करके 22-23% और उसके बाद 25% की तरफ जाएगी। तो ये हम अगर चीजें देखते हैं और इसके अनुसार देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों सेक्टर्स की एक सिनर्जी का हिसाब किताब रखता है, यानी जो इधर बेरोजगारी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसको एम्प्लॉय करें एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैक ऑफ न्यू इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव भी नया आ जाएगा और वहां पर भी खुशहाली के दर्शन होंगे। माफ कीजिएगा, 80 लाख करोड़ लोगों 80 करोड़ लोगों को आज देश में अनाज देना पड़ रहा है, हर महीने अनाज देना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी गरीबी की निशानी है। हम कुछ भी बोलते रहे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन,
लेकिन एक बहुत बड़ी देश की गरीबी की निशानी है। 75 सर साल के हंगर इंडेक्स में भी इंडिया स्लिप कर गया है अप टू सम पोजीशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाँ, वो सर्वेस कुछ और हैं, लेकिन यहाँ तो हम वास्तव में देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज देना पड़ रहा है सरकार को। ये गरीबी की निशानी है। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए था। यस सर। हमको अंदर झांकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको भारत की बुराई करनी है, लेकिन हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि 75 साल के बाद भी हम इस पायदान पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और हम क्या कर सकते हैं जिससे उससे हम निकल करके बाहर आए। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, मेरे लिए भी है, और लोग भी जो मेरे तरह सोचते होंगे उनके लिए भी होगा। तो ये एक इस सिचुएशन से हमको देश को जल्दी से जल्दी निकालना होगा। हम कृषि प्रधान देश में अगर ये सिचुएशन है तो अच्छी बात नहीं है, तो हम सबको मिल करके इसका निदान खोजना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इजराइल भेजिए, सबको ट्रेनिंग कराइए कि कम पानी के अंदर और कम जमीन के अंदर भारत कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है, अधिक से अधिक खेत में से आमदनी कैसे दे सकता है। तो मेरी ये थोड़ी थिंकिंग रास्ते से अलग हटके हो सकती है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि कृषि के क्षेत्र में हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे लिए कोई अचीवमेंट नहीं है, हमको इससे डबल छलांग लगानी है। तो मैं इतना ही कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने अपने समय से, उम्मीद है, ज्यादा समय नहीं लिया होगा, और यस सर। आप सबको मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। कोई सर प्रश्न हम हो? बिल्कुल सर हम बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, हमें वर्टिकल स्पेस का यूज करना चाहिए। हम भी अपनी ट्रेनिंग के थ्रू सर यही एक लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऐसी चीजों को यूज करके आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। या आप, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप मशरूम कल्टीवेशन कीजिए, एपीकल्चर कीजिए। हम भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू सर सेम ही एक मैसेज है जो अपने यंग यंग जो हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं या कोई भी एग्रीप्रेन्योर जो बनना चाहता है, उन तक हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू कि वो जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एज मच एज यूज करके उसमें एक अच्छा एग्री बिजनेस अपना सेटअप करें और एक आउट ऑफ द बॉक्स चल के वो हमारे देश के एग्रीकल्चर को और आगे लाएं। और ये जो जिस गरीबी के पड़ाव पे हमारा देश खड़ा है वहां से उस पोजीशन को हम इम्प्रूव करें और हम भी एक सस्टेनेबिलिटी और एक डेवलप नेशन जल्द से जल्द बने। थैंक यू, थैंक यू। कोई सर सवाल हो हम तो बिल्कुल मैं। आपके विचार हैं। हाँ जी सर। सर सवाल सर जैसे कि आपने अभी अब बहुत अच्छे अपने विचार हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करे हैं। तो जैसे जो हमारे किसान, जैसे आपने बोला कि जो हमारे फार्मर्स हैं या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्कीम्स जो है ऐसे लानी चाहिए जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट मिले या उनको मतलब कुछ फंडिंग मिले। तो आप कुछ बता सकते हैं अपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि कोई ऐसी स्कीम्स हो जिनके थ्रू उनको फंडिंग मिल सकती है उनके एग्री बिजनेस वेंचर के लिए। अभी बहुत स्कीम्स आनी बाकी हैं, लेकिन सरकार ने एक 60-70 पेज की किताब जारी की है। मैं जस्ट एग्रीकल्चर से शेयर करूंगा, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो उसमें काफी कुछ है, लेकिन वो सब एक, उसमें भी एक चेंज की जरूरत है। ये जब सरकार की सोच इस दिशा में बढ़ेगी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ज्वाइंट करके हमने सोचना है, तो उसमें बहुत सारी स्कीमें आ जाएंगी। मैं आपके साथ यस शेयर सर। करूंगा वो पुस्तक। यस सर, श्योर सर। सर कुछ
हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे जैसे नबार्ड एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करता है हमारे एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के लोगों को और एग्रीप्रेन्योर्स को। तो एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो उसके जैसे एग्री क्लिनिक्स किसी को सेटअप करने हों या कुछ और एग्री बिजनेस वेंचर हो, उसके लिए नाबार्ड के अलावा कुछ और ऐसे स्कीम्स जो हों, जो उनको जैसे एंजल इन्वेस्टर्स हों, उनको कैसे कांटेक्ट करें, या कोई और जो मतलब फंडिंग एजेंसीज हैं उनको कैसे कांटेक्ट करें, ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनको सलाह नहीं दूंगा अपने एंटरप्रेन्योर्स को कि वो इन लोगों के पास जाए। नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स 15-20 दिन से लेके 1.5 महीना तक लेते हैं, उन्हीं के पास जाना चाहिए। वो जितना पैसा आपको देंगे उसका केवल ब्याज लेंगे, 6-8 साल के बाद पैसा वापस लेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट कागज पूरे कराएगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, जल्दी आ रहा है, लेकिन वो आपसे आपकी 50% इक्विटी ले सकता है, 40% इक्विटी ले सकता है। यानी काम आपका शुरू नहीं हुआ, एक हिस्सेदार उस काम का पहले ही आकर के खड़ा हो जाएगा। तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों को मजाक में बोलता हूँ, भाई ये वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं हो गए तो वल्चर कैपिटलिस्ट हो गए। ये खाने की चीज दिखी नहीं और लपकना शुरू हो गए। तो वो एंटरप्रेन्योर के हित में नहीं है कि वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाए। नॉर्मल बैंकिंग चैनल में बहुत सारी स्कीम्स हैं और उनके पास वो जा सकते हैं। हमने सरकार को ये रिक्वेस्ट की है, जिसके भी सिबिल स्कोर में एक बार का फेलियर हो, वो भी कोरोना पीरियड में, तो उसको इग्नोर किया जाए, उसको आपकी रेटिंग देखते वक्त इग्नोर किया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए, यानी बैंक वाले लोग तो देखिए, उनको तो तनख्वाह 30 तारीख को मिल जाती है, एक एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलती। उसको तो जीवन की कठिनाइयां, उतार चढ़ाव सब झेलने पड़ते हैं। तो फिर उससे अपेक्षा करें कि कोरोना पीरियड के अंदर वो अपना सिबिल स्कोर भी ठीक रखे। यानी जो मजदूर गांव जा रहे हैं उनके जाने का खर्चे का भी व्यवस्था करे, जो यहाँ रह गए उनकी तनख्वाह भी पूरी दे, फैक्ट्री भी बंद, फैक्ट्री के अंदर सब खर्चे चलाए। ये बड़ा कठिन काम है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो लोग दोबारा खड़े होना चाह रहे हैं उनको एक बार के लिए इसमें ढील दी जाए, हाँ जी ताकि सर, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। नॉर्मल बैंकिंग चैनल से उसको पैसा मिल सके। यस सर, यस सर। सर ये जो गवर्नमेंट है हमारी, वो राइट नाउ बहुत स्कीम्स लेके आई है ऐसे जो किसान के और एग्रीप्रेन्योर्स के और बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के हित में है। बस जो एक लूप होल है या एक कमी आप बोल सकते हैं, वो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स को या फार्मर्स को स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो वही अवेयरनेस जनरेट करने के लिए एक हमारा ये कदम है उस तरफ कि हम अपनी ट्रेनिंग के थ्रू फार्मर्स को और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डिफरेंट स्कीम्स के बारे में और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन सब चीजों के बारे में अवगत करा सकें। तो सर यही एक हमारी कोशिश है और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ आई होप हम कोरोना पीरियड में जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई थी, हमने फेडरेशन की ओर से सरकार को लिखा कि इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं, आप इनको एडहॉक लिमिट दीजिए। बैंक वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास एडहॉक लिमिट देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। हमने सरकार को फिर कहा, बैंक वाला कभी भी नहीं चाहेगा अभी पैसा दें इंडस्ट्री वालों को। हमने कहा सरकार अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके वो पैसा रिलीज करे। तो इवेंचुअली 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने उसमें रिलीज किया। पहले 3 लाख करोड़ किया, उसको बढ़ा करके फिर 5 लाख करोड़ किया। तो इंडस्ट्री को उससे बहुत मदद मिली। ऐसे आपके जो प्लेटफॉर्म आज बना है, इस प्लेटफॉर्म की जो फाइंडिंग्स हैं सभी मंचों से उसको सरकार के पास भेजना चाहिए। आप भी भेजिए, हमारे पास भी उसका जिस्ट भेजिए, हम भी फॉरवर्ड करेंगे सरकार को। सरकार सुनती है, पहले वाली बात नहीं है। बच्चा रोए तो हाँ जी माँ सर। सुनती है उसकी बात को,
लेकिन सही दिशा में हमको अपने सुझाव रखने चाहिए। हाँ जी सर, हमें पता होना चाहिए कहाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ पे हमें किससे बात करनी है। ये आपने बहुत ही ठीक बोला है सर। और यही हमारा एक जो है मोटो है कि हम लोगों को बता सकें, एक सही डायरेक्शन दिखा सकें अपनी ट्रेनिंग्स और अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। और आई एम वेरी श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स के साथ, जैसे आज हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट डे है और ये 15 दिन का प्रोग्राम है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स और आपके विशेष की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और मोर देन 3000 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया है, सो आई होप कि सब मैक्सिमम जो लोग हैं वो फायदा उठाएंगे हमारे प्रोग्राम का और नॉलेज गेन करेंगे यहाँ से। सो सर, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास। सो थैंक यू फॉर दिस वेरी वैल्यूएबल एक सेशन। आपके श्रोता का क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज कन्वर्स इन इंग्लिश। मेरा उनसे यही निवेदन है, 75 साल हो गए हम भारत के लोग एक दूसरे से वाया लंदन बात करते हैं। उनको गए को 75 साल हो चुके हैं। हमको अपने देश की भाषा में बात करनी चाहिए। हमको अपने देश की भाषा में बात करेंगे, अपने गौरव का एहसास होगा कि हमारे पास भी एक भाषा ऐसी है जो हमको जोड़ करके रख सकती है। और आजकल किसी को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नेपाल भी जाता हूँ, भूटान भी जाता हूँ और दूसरे देशों में जाता हूँ, वहां सब हिंदी चलती है, लोग समझते हैं। हमारे बम्बई के हिंदी सीरियल बनाने वाले सब जगह हिंदी पहुंचा चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास करके हमको हिंदी सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इतना ही कहूंगा, आप अन्यथा नहीं हाँ जी लीजिएगा। सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। आपने अपने इतने प्रयास में है, फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए टाइम निकाला। इसके लिए सर, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मैं होप करती हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So, on the behalf of entire team of Coast Kashmir, Just Agriculture and AEFWS, I deliver my heartfelt gratitude to all the speakers and participants for joining this international training and being so patient and attentive throughout. So, last but not the least, I would like to thank and congratulate organizing director of this training program, Dr. DPS Badwal, course director of this training program, Dr. Mohit Bhardwaj, and other members of organizing committee, members of technical team, and thank you all and have a great evening. So thank you. That's all for today.